Hi, the screen is visible and I am audible. Yes, sir. Your Okay, screen is visible also, and your voice is also. okay. Thanks.
So guys, good morning. So am I audible to you? Just type in the chat. And is the screen visible also? Though I had the confirmation, but for you people. Okay, great. So chalo, let's see what's happening. Nifty opened gap up. We have taken the spread near this. We closed it. I don't know what was the, let me see. This is the current spread what we have made. I have posted in the group. Per lot spread. The margin required would be around 60,000 for this entire spread. And max profit would be 2,200 per lot, per set itself. It's a huge range set. 15,850 to 16,340. The probability of profit is 90%. So by day end today or tomorrow morning itself, we'll close the spread. If there are no big movement. Market is stuck. Why it is stuck? Why I told in the morning, PCR is at 1 at 16,100. So we'll come to all those things again. So let's check our positions in the let's check our stock positions. Those who have not entered yet in Bata, ICICI and Axis can enter here also, because the trade has been triggered. So let's check. Let's start with Axis. I'll come to the setups and all those things after some time. Axis, it got triggered here and we have a gap up until this stop loss is not crossed 690. You can be in the sell trade. You will have a better, like 10 points only stop loss, 10 or 20 points on closing basis. That's all. ICICI Bank. Similar setup, it got triggered today also until this stop loss 775 does not hit. You can be in the trade. Bata already at the entry point, or rather we have crossed. Actually we entered nearly 1800, so we are in slight profit here. Now let's check Mahindra and Mahindra. Those who entered here, I averaged actually here, so I'm in a slight profit. So until this stop loss is there, my motto always is either stop loss or target. We have to hold the trade. Now let's see in the scene. In the scene are in good profit. 3 days after 1, 2, on third day it has started giving movement. Now next go to Godrej CP. It is still in our SL range, so it's fine. If anybody has not entered, can enter here also with the small, your stop loss becomes small. Britannia. So we are in profit, and now 5 EMA is becoming a resistance once it gave close below 5 EMA.
Next is Hindustan Lever. So it is still in the range. So our stop loss is not hit. It's fine. Asian Paints is interesting. Asian Paints opened above our stop loss, went high, and now it is coming down again. So we'll wait for closing. If today it closes above our stop loss, we'll exit this trade with stop loss. Or there may be a possibility now I don't know how to pin this one. There is a possibility now if this becomes like this red bar, then again it will be a good opportunity to short. Now SL will become slightly higher. It is way above 5 EMA. Let's wait for closing. That's what I am telling. Closing is important. Maruti, the final one. Let's see. Great. Somebody would have shorted here also actually. They are in good profit. I also have come into profit. Now this was my entry point. I averaged actually. So now it has come. So I'm expecting 8,000 zone for Maruti. So all my positions are in short. All our positions, group positions are in short. So let's see how things goes. Now let's go to the data. What data is telling today? So long buildups are more as of now. The advanced decline is in favor of bulls. All the sectors are in green. There are put writing happening in 16,100, 35,200 straddle going on, 35,500 straddle going on in Bank Nifty. So it's a mixed day. It is going to be a mixed day, what I am assuming till now. The overall call writers are more than puts here also, but intraday position, put writers are adding up. But here in Bank Nifty, both are running parallelly. Now let's come to option chain. 16,100. PCR is 1.11. It's slightly bullish to neutral. So it will try to hold again today. This is the third day it is trying to hold actually. 16,000 near to 5. So these zones are actually becoming good support until they start unwinding. And if we see 16,200, big resistance, 0.33. So what we have done, sold this call, sold this put. Simply, if market remains in this range, so this will decay faster, both of them. Let's eat in one day. We'll wait for one day and see how much it decays. If market goes higher, still it will decay. IVs will not rise much. And India VIX is coming down. Today it is already 2.4% down. So this is about today's things. To start with, let's see the charts, what's happening. The Bollinger Bands, what I mentioned in the morning, are huge. Means volatility will be huge. The opening itself is huge. So market may stay in this range intraday, 16,000 to 16,200. Though in Bank Nifty is now contracting,
Let it contract and break out, we will play. But Nifty, if you see, it's a wide range. So volatility, maybe it will go here, come drastically here. Like this, it may go today in Nifty. Then it may become a small range at the end of the day. Let's see how it goes. But probability is slightly bullish to neutral. If it breaks yesterday's high, this high, then it's good. Then let it consolidate here and the Bollinger Band also contract slightly. Then it will be a good proposition to go long or short. Other than that, it's better do strangles and sit tight. So now let's go to questions. So today inflation data from US. What to do with the data? What will happen with the data? Everything is factored in the market, Rakshit. Don't fall for all this trap. This data coming, that data coming, budget is there, this is there, that is there. Everything is there in the price. Price will factor everything in advance. Price or market runs 6 months in advance of all data. If any data is coming, it's already known to some or other person and they will create their own positions. So don't fall for this data is coming, that data is coming. If you are hedged, if any, you means anyone, if anybody is hedged, their positions are hedged, they should not worry about what data is coming. Axis Bank, can you explain again? Okay. Where is Axis? Okay. No, nothing to see. Actually, this is the 5 EMA, what I explained yesterday, right? So for our 5 EMA, yesterday itself, the trade was triggered, right? But today it gapped up and going upwards only. So our SL is here near to 690. So until this 690 stop loss is not hit or not closed on a daily basis, it's still a good proposition to sell. Now, if anybody is taking here near to 680, 682, his or her stop loss will be very small, only 10 points, 10 or 15 points, rather than those who has taken at 675. I also have taken at 675 yesterday itself. But what I did, I averaged here at 680. I have shorted one more. So my average comes to nearly 680. But for those who can able to handle the volatility or the M2M, they only should average. Otherwise, nobody else should do it. Please check your capacity to hold. If you are not able to sleep in the night due to your position, don't take those positions. Simple as that. So 1 second, I think where are the participants? Yeah, somebody raised hand. Okay, I allowed to speak. I have taken LT futures. Let's see LT. 1 second. Taken means I didn't understand. Here 6. It should be at 1654. If anybody has taken LT, but though it's not that wholeheartedly bearish candle, your stop loss, just keep a stop loss 1700. If any close happens, this is making a actually bearish thing, bearish tone, but still I'll say hold on to your shorts if you are taken shorts here. Yeah, Abhishek ji. हेलो Yeah. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अगर निफ्टी डेली में
बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करके ऊपर निकलता है तो वो मतलब हम हमारे लिए बुलिश ही साइन रहेगा ना डेली टच में? करके मतलब डेली में, मैं मतलब डेली हाँ यूज हाँ नहीं करता, 1 मिनट ठीक है, मैं इसको डेली में करता हूँ। बाप रे, टच करके देखो, मेरे को तो दिखने एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा डिफिकल्ट है ये, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। टच करके सर, ऊपर मतलब निकल, टच मतलब वो जो बैंड ऊपर जा रहा है, हमने क्या बोला था कि वो नीचे से अगर ऊपर जा रहा है और 5 EMA के ऊपर ही है हम अभी, अगर ऊपर निकलता है तो ये बुलिश ही साइन है ना हमारे लिए? हाँ बुलिश है ये, यूजुअली बुलिश है। देखो नॉर्मली डोंट लुक, दीज आर मतलब ये सब रेफरेंसेस है, आप खाली डाउ थ्योरी को फॉलो करो। डाउ थ्योरी क्या बोल रहा है, ये पहला लो है हमारा, ये दूसरा लो है, ये तीसरा लो है, एक भी लो टूटा नहीं तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ये लो है अभी सिग्निफिकेंट लो, अब क्या बना, कल का लो सिग्निफिकेंट लो है। अब ये अगर टूटा तो हम शॉर्ट करेंगे रिट्रेसमेंट पे। ओके ये टूटा हम इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करेंगे, हम एक पुल बैक का वेट करेंगे और इस रीजन पे हम लोग अपना शॉर्ट्स बनाएंगे। और अगर ये टूटा तो हम लॉन्ग जाएंगे एज पर डाउ थ्योरी। ओके। और सर दिस उसके हिसाब से फिर हम टारगेट कैसे निकालेंगे, वो ऑप्शन चेन डाटा में कैसे दिखेगा हमें? ऑप्शन चेन में आपको टारगेट कैसे दिखेगा, ये तो ऑप्शन चेन में आपको एक मतलब गाइडेंस मिलेगा कि ऐसा हो सकता है। जैसे हम क्या सोच रहे हैं कि आज 16100 टूटना नहीं चाहिए, इधर के आसपास ही घूमना चाहिए। अब टोटल प्रीमियम कितना है 16100 का, 97 और 64 मतलब 150 नियरली। yes. तो 150 मतलब 150 ऊपर 150 नीचे, तो कितना हुआ 16250 और नीचे 15950, तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर ही घूमना चाहिए। ओके सर, मतलब जो मूवमेंट है वो ऐसे दोनों के प्रीमियम को प्लस करके ऊपर नीचे कितना जाएगा वैसे निकालते हैं क्या? यस ओके अप्रोक्सीमेटली। बट वो रेंज जब टूटता है ना तब वो राइटर्स पैनिक में आएगा और तब बड़ा मूवमेंट होगा। ओके 16250 और 15950 ये है एक्चुअल रेंज एज पर करंट डेटा। बट वो अगर टूटता है 250 को के ऊपर एक बड़ा कैंडल क्लोज देता है या 950 के नीचे बड़ा कैंडल क्लोज देता है तो ही जाके बड़ा मूवमेंट होगा नीचे या ऊपर। ओके 950 कहाँ है, अगर हम देखें तो 950 आता है इधर, वही हमारा देखो, हमने जो डाउ थ्योरी का लाइन लगाया वही है ना 950। तो ऐसे ही आ जाता है ना। और 250 कहाँ, ये रहा जो स्विंग हाई है करंट। जो हाँ यस तो देखो देखो ऑपरेटर्स कौन है, जो ऑप्शन राइटर है मतलब बड़े प्लेयर जो है, उन लोगों ने ऑलरेडी रेंज बना दिया 250 और 950, इसके अंदर ही वो लोग रखने का ट्राई करेंगे और प्रीमियम खाएंगे। जिस दिन ये टूटा उस दिन नीचे जाएगा और जिस दिन ऊपर का टूटा तो वो ऊपर जाएगा। सिंपल डाउ थ्योरी यूज करिए और इसको यूज कीजिए ऑप्शन चेन को फॉर रेफरेंस पर्पस। ओके ओके सर। बैंक निफ्टी टूट गया 5 मिनट में देखते हैं इसका भी क्या हुआ, बट देखो रेंज में ही है अभी भी। आई विल क्लियर दिस। Morning, sir. मॉर्निंग। Hi. I just want to check. Maybe I have not been able to understand the concept completely. Okay. In terms of Axis Bank, what I understood yesterday is if you see a doji, the low of that doji is 673. Let's go to Axis Bank. Okay. Now After the big blue bar, the second one is 673 is the low. yes, this one, right? So what I understood as a concept was that I will only go for a short once it Only breaks. below this. Yes. Now I'll tell you what has happened. Yesterday's 45 minutes chart, you see here, this low was 676. Okay. And after 3 p.m. it was broken. All right. So we gone short here actually at 676 itself. But in this case, the 5 EMA And is above. it is 5 EMA above, but as per 45 minutes, what our concept was also, if it, see what has happened at one point, let me draw it and show.
Okay. At near to the closing, it was like this actually. The entire thing on average basis, it has gone. This part, what you are seeing as doji, right? Yes. This is the average closing price. But if you see this, the LTP is here. But while the closing happened here. Okay. So as per our 45 minutes chart, we are short. We shorted at this low, day low. This was the day low, right? I'll show as a day low means before 3 p.m. I'll clear this, everything. Now, first 45, second, third, fourth, whatever it is, this candle is last 45 minutes candle. And before that, this was the day low. And this candle has closed below the day low. Okay. And we went short here at 676. Okay. As per LTP, we closed here actually. But as per average price of last half an hour. Yes, last half an hour, we closed here. So Understood. that's fine. Anyway, our low is triggered as per this, because entire day it has crossed the last, after 3 p.m. it is closed. So we will take the spread. Now what I am telling, ki whoever has missed that trade, they can enter it here also, wherever it is, until this stop loss is Just there. to sum it up on a daily time frame. Yeah. What I was thinking was also correct in a sense. I should short once it is below 670. Yes, that is also correct. If you are taking a position after 1 day. After 1 day, but in terms of 45 minutes, I can still take it if it breaks the day's low. Yes, correct. You Got after 3 p.m. it should break actually. Like the Got it. closing should be below the day low after 3 p.m. Got it. Understood. Then you can take the position, and let's say today it has gap up. So a gap up, if you have the chance, you can still enter here. Those who has not entered or those who want to average, but stop loss remains the same, a slight above the recent high. Got it. That should be the stop loss. If that is done in closing basis, one should exit the trade entirely. Got it. Okay. Thank you. Yeah. Let me clear this. Okay, Roshan has asked, Sarji, can you help in learning how to hedge stock futures in Strategy Builder? Here it's not, I can show it in Opstra only. So let's say you want to short Axis now. There are two probabilities. How you can do the short? Either you short the future at current price. Sorry, it's long actually. So it will be like this, where your loss is unlimited. Now to hedge this, what you can do, just buy 700 ka put, sorry, you are shorted, no, buy 700 ka call, one lot. You can hedge, like let's say it has gone 690, so your maximum loss will be 30,000. If you're hedging in that way, ki you're buying a future and buying an call option. Now this is one option. Another option is buy in the money. Now it is 680, right? Buy in the money put, 2 lots, and sell out of the money, slide out of the money, sell 1 lot. This is similar as futures payoff. Buy 2 lots,
in the money, sell one lot out of the money. Your margin is also same like as futures, future spread, and your probability of profit also increases. POP is same, it will be same for future also, but yes, your margin requirement will be small and you can handle this, but futures volatility you may not be able to handle. So you can either short a future and buy a call, or buy 2 puts, sell 1 put. Like that also can be done. Let's see what's happening. See, it is still in the range. Let's see what has happened to our position. Yes, Piyush ji. I'll come to the Bollinger BBMA strategy, how to do. हाँ, बोलिए. सर M&M फाइनेंस ध्यान में रखिएगा आज. M&M Finance. Let's see. हाँ, ये अच्छा है. ये बनने दीजिए इसको 3 बजे तक. 3 बजे तक देखिए. Yes. ध्यान में रखिएगा, इसलिए सिर्फ बोला. Yes, it is a good setup actually. It's a good setup. इधर भी हुआ था, इसने 1:1 दिया, फिर चला गया ऊपर. ये इधर बन रहा है अभी. Let it finish. 200 के नीचे क्लोज होगा तो बढ़िया रहेगा. इधर क्लोज देगा तो ठीक है, फाइन. आप एक बार याद दिला दीजिएगा. हाँ, बता दूंगा 3 बजे का. Okay. Now let's start with Bollinger Band BBEMA. What I tell. उसको क्या क्या करना है. Bollinger, this is, let me write. BBEMA, I mention it as mostly BB is Bollinger Band, EMA is EMA, as you know. So what I use Bollinger Band of 21 and 2. Second is Bollinger Band of again 21 EMA, but 0.5 deviation. Third is 5 EMA, as I keep it in all my things. And fourth is VWAP. These are the 4 indicators what I keep for BBEMA. Bollinger Band EMA. How to trade in that? We have seen in yesterday also, but I'll explain that. This is clear. If you want, you can write it down. I'll just give 5 minutes time. If you want, you can write it down. 4 indicators: Bollinger Band 21.2, Bollinger Band 21 and 0.5, 5 EMA and VWAP. What is the use of 5 EMA here? 5 EMA will be only used for stop loss trailing. 5 EMA को हम stop loss trailing के लिए ही use करेंगे. VWAP will be an indication to take a trade. And Bollinger Band तो है ही, upper band और lower band. वो हम देखेंगे कि कैसे हम use करते हैं, कैसे हम use किए हैं. So let me clear all. हम कब एंट्री करेंगे या कब देखेंगे कुछ अच्छा ठीक से. पहला तो firstly the Bollinger Band, after so much opening or whatever it is, it has to contract. It has to come very, very close. And then the price needs to close below. If it's a lower downward movement, it has to close below Bollinger Band. It has to close below VWAP.
it has to close below lower Bollinger Band, and then the price also need to be below the VWAP. Then only we'll take an entry. Where we'll take an entry, I'll clear it again. On the closing candle itself. Just we'll keep 5 rupees buffer in Nifty, 5 or 2 rupees buffer in Nifty, and we'll enter here. Our initial stop will be the recent swing high if it's a downward movement. Our trade will be, first target will be 0.5% of the price of Nifty. If it is 16,000, 0.5 is 80 points. So first target should be 80 points. Our trailing stop loss will be any closing above 5 EMA, and of that the second candle's high should be the trailing stop loss. Let's say here our entry got triggered here. Now this candle, the closing is above the 5 EMA. We'll wait for second candle. The second candle is this. So this high should be the trailing stop loss. Our stop loss from here comes to here. Now after that, it never touched. It went down, gave our target of 80 points. Here again, you see this candle has closed above 5 EMA. Second candle is this. So which is the high? This is the high. So we'll trail our stop loss from here to here. We will book our half quantity near 80 points. And then if we see, this is the other candle which closed above 5 EMA. This is the one second candle. Iska high is the trailing stop loss. So this got hit. So half we booked at 80 and rest half will book here only. So we are still in profit. When we will take the trade? Only when the price is below VWAP and the price in single candle closes below the lower Bollinger Band, and after the contraction only. If it happens, then we will take the trade. Otherwise, we'll not take the trade. Same here. Yesterday we failed in the long. Why we failed in the long? It was contracting, but it has not contracted actually, and it went high. We entered here actually, but our stop loss, trailing stop loss from here to here we have bought. So this got hit. So it's fine. We have not seen it due to our webinar, so I have not seen this, but this was also a good trade. So this is for short. I will show for long also. Just let me clear this. Now here. See, it was a small contraction and it closed below Bollinger Band, as well as price was below VWAP. We took an entry. The second candle only went above 5 EMA. This is the trailing stop loss now. It came down, again closed here. So our trailing stop loss hits, will be out. Now for long trade, it was in a contraction zone actually. And this candle closed above this Bollinger Band EMA. Our entry will be here for long. Our initial stop loss is here. Now on entry, after entry, this candle closed below 5 EMA. So here we should keep our stop loss. Actually, we should wait. We can wait for one or third candle also, no issues, because it was just an entry and after that only it has come. So you can wait here, or if your stop loss is hit here, you can still do an entry here also. Your initial stop loss will be this swing low, and it gave 80 points. First trailing stop loss is here again. Second trailing stop loss, where is the closure? This is the closure.
here. So your second trailing stop loss is hit. So this is as simple as that. Now anybody will ask why this 0.5 deviation. This 0.5 deviation inner band helps me to prepare myself for with the trades. Like if it is closing below lower band and staying in the lower band, so I will choose to short a call option. So I'll be prepared. Now if it went above the inner band and staying in this, let me clear this. It went above and staying in this zone, in the upper band zone, I will find options of put options to short. So once it triggers, I'll short the put options with my hedge and all, and then I'll close it here. So inner band helps in a way that what it is trying to do, what the price is trying to do. So that's all in the Bollinger Band BBMA trade. It's a very simple setup. Only you need to keep a watch on it. Anybody has doubt in that, they can ask me. You can raise your hand, or you can in chat, you can type. Somebody has asked, okay, Mausam ji, if I take short position in most of your recommendation, then how to hedge it? See, if you are playing in options, playing through options like buying ITM options, buy 2 lot and hedge with 1 lot OTM option. If you are taking a futures, let's say you told LT you have sold at 1632, you can buy 1650 or 60 or 1700 call option to hedge it. Your loss will become minimum, actually not minimum, it will be capped. If you are taking a futures, then hedge it with one option, opposite option. You are shorting, then buy a call option. If you are going long, then buy a put option, just 2 or 3 strikes below that current ATM strike. Please repeat Bollinger Band setup again. Vinay ji. Okay, I'll repeat. I'll repeat after some time. Even Kabir ji, I'll repeat again, but after some time. I book Indus. What has happened in Indus? Areva, our target has come or not? 1 second, 1 second, 1 second. No, why you booked so early? Wait for the target to come. Don't be in a hurry. If you're taken this much risk, no, it was a risk. So at least 1:1 you booked. So every time you may not be able to get 1:1. No? Wait for your target. Maybe it may take 1 or days, 2 days, but it will come. Don't be in a hurry. That's my suggestion. Maybe do the settings in front of us. I have to open a different chart. Then how to open a chart, fresh chart. Okay, let me not save it. Let me duplicate this. Now, first open double layout. How I do? I'll just let me clear everything.
5 minute का setup. Here also 5 minute का setup. Here I require Nifty futures. Okay, this one I'll change its symbol. Here I require Nifty bank. Okay, here only I'll show. Now you want to add Bollinger Band. Let's say in here Bollinger Band. One Bollinger Band has come. So double click it, or when you can double click this, go to inputs. It automatically will be in length 22. I keep it as 21. This is my first band, the bigger band. Okay. Now second, I want to put again, go put Bollinger Bands. One more band will be added. Which one is what? I don't know. This is again 22. Now 21 multiplier or ATR multiplier, it will come 0.5. This will become the inner band actually. Done. 5 EMA is already there. Let me delete the 5 EMA. We'll put FX EMA, moving average exponential. I'll just select this, double tick, length is 5, closing basis, style, I'll put it as black, a little bit more thicker. Done. 5 EMA also. Now I want to put VWAP, FX VWAP, basic default VWAP. Where is the VWAP actually? Blue one. Okay. I'll put different fluorescent color. I don't know which one I had kept, but anyway, okay. So this is how it looks. This is how you can do a setup. Now, how you should trade? Again, let us go in. Let us show in Bank Nifty now. Yesterday it opened below. One more thing I forgot. The first opening and closing. Opening should always be inside the band and closing should be above the band. Then only take the trade in the opening hour. Otherwise, don't take the trade. I'll show the example where it has happened. Anyway, opening has happened. The Bollinger Band was very wide. It was very wide. Will not take any trade. Now it opened, it has started contracting. Here it has contracted. After that, this is the candle which closed below the lower band. Now here the red line, the red line in VWAP, the price is below the VWAP. We will short below this. Okay. And initial stop loss is this swing high. Let me clear this. I'm just repeating Vinayji and somebody else, Kabirji. I'm just repeating. So again, let us go and check. We will short here. Initial stop loss. Our trailing stop loss will be a close above 5 EMA and second candle. Now here 0.5% of 35,000 come to 170, 180, or let's say 200 points. So on 200 point, we will wait for our first target. If not, how we will trail our SL? Let's see here. Any candle closes above 5 EMA. This is the candle which is closed above 5 EMA. 5 EMA is a black line.
We'll wait for the second candle. Second candle also has closed. This high we should mark as the stop loss. Now, from here stop loss, it has come to here. So it has come down, but next candle, bigger candle, it has become a big candle and hit our stop loss. Our stop loss has gone cost to cost in BBM actually. So first trade over in Bank Nifty, nothing we have got. Again, we will wait. Let's see what happens. Now, here if you see, there was some contraction, but it started expanding. But anyway, we'll take the trade. This is a candle which closes above the VWAP. Pink line is the VWAP. Closes above the upper band. We will buy here. Our initial stop loss is this. And after the move happens, this is the first candle which has closed below 5 EMA. Black line is the 5 EMA. Second candle will wait, will bring the stop loss here. Or you can wait for third candle also. If third candle also is giving that low also, you can keep a stop loss. Now this trailing SL has hit, but initially yesterday we had kept it here. So you can trail and just cost to cost you would have got. This is one kind of entry. Let's see some other setups in Bank Nifty if it has come. See what has happened here. If we tell the opening on 11 July was inside Bollinger Band, but closing was outside, we can take this trade actually. If we see this was a consolidation previous days and it opened inside and went outside. So this high we can take and this low is the stop loss. Entire day if we see, it has given our target actually 200 points aram se. But it would have given a multiple entries. Now stop loss where you would have trailed, there is no closing below 5 EMA. First 5 EMA closing was here, the stop loss is here. Your trailing stop loss would have hit here, gone at cost. Your entry was here. Your trailing stop loss is here. And it got hit here. So you're almost slight profit in Bank Nifty. Now, next, when we get the chance, this I'll not consider as close because it just touched. So I'll not take this as a close. Now, this is a close actually happened after consolidation. And we have played this also actually in group. This is a consolidation. This one is a break, but I'll not consider as it was very close. This one I'll consider as close. So we'll take long here. Initial stop loss is this swing low. First candle below 5 EMA, second candle. We can wait for third also. That's what I told. Just wait for third. If it is, see, it came to VWAP and then it bounced. So if it is near some major VWAP or 20 EMA or anything, you can just take that as a reference. So third, you can do it here. Trailing stop loss. It has gone up, again come down. This candle closed below 5 EMA. This candle low, you can take as a trailing stop loss again. It went up, gave 200 points.
This is again the first candle below 5 EMA, second candle below 5 EMA. Here the trailing stop loss hits. Done for the day. So one trade cost to cost, another trade gave 200 points, and third trade like trailing, if you are doing in 2 lots, the trailing stop loss hit here. So you are still in profit. Sir, 5 EMA trade on Nifty 5 minutes. How can I check while I am teaching? I'm not able to check. No, I'll check it. Wait. So Gauravji, I have shown how to do settings and how to check it things. Kabirji, I think it is clear now. Hopefully Binayji, hopefully it is clear now. If you could, Roshan, if you could explain the reasoning again for shorting option of Bollinger Band levels today. What reasoning? I've given the reasoning, no? If I'm looking for long, if this is a long, I will short put here. If I'm looking for short, I'll short a call here. That is only the reasoning, right? There's nothing excessive things in that. Satyam ji has told 5 EMA trade on Nifty 5 minutes. Let's go and check. Yeah, it was there, but it is not a red candle. I will avoid that. Actually, this was also there. Bank Nifty was there since morning. This one was there actually. But we are in, see, I am showing something, so I'll not be able to concentrate so much. Yesterday also I missed so many trades. So while concentrating in something, we'll not be able to find out opportunities. It's fine. My time is on spending time with you people to show you the concept, how the concepts work. You people can take trade on your own if you are seeing. Kevalji is asking, just wanted to ask if 5 EMA was triggered in BNF and Nifty today. I took trade as per yesterday learning and wanted to check whether it is correct or not. 5-minute chart. 5 EMA is there actually, but Nifty I will avoid because it's just, though it's a rejection candle, but it is not a red candle. So I'll avoid here. In both Nifty and Bank Nifty, 5 EMA was there actually. Short side. And it has given target also if you take. And it is still within the Bollinger Band range. So Kevalji, you are correct. There was trade. But I'll not able to concentrate so much on finding trades actually when I'm showing or teaching something. Maybe after some time, after everybody is clear in this group that yes, they can understand what is BBMA, how to take trade, then I can able to concentrate on finding trades. So now maybe long trade will be there. So now anybody wants to ask anything? Let me clear all these things. Any doubts regarding BBMA, you can ask. See, it will be today ping pong between the Bollinger Band. Now let's go and check the data. I've not checked data since long time. What is happening in the data? 16100 came below 0.75. So it will become the resistance now, slowly. But intraday build-up is still in green.
and 16,000 is 4. Still it is good support. It has become very wide. Now it will again come down. Today it will be a ping pong day as of now, as I am thinking. Now let me close this. IndusInd Bank, let it come. Our all positions have come in green actually. Almost except Godrej CP, now HUL and Asian Paint. Okay, anyone was to Srinivas ji, this is the second time I have explained BBMA. You will get the recording. Kindly go through the recording. It will be very difficult for me to explain third time, fourth time, fifth time like that. Just go through the recording. 2 times I have explained. Even I have got the thread also on BBMA posted in the group also. You can go through it. If any doubt, still I am there. You people can ask me in the group itself or DM itself. Sir, left chart, how to read volume profile. First, concentrate on 2 things what I am teaching. First, Satyam ji, I don't want to make khichdi actually. So even other people have asked me many other things. I told that first what I am teaching, kindly master those things. Rest, if you people are there with me for a longer period of time, you people can learn a lot of things, that I can guarantee. I practice a lot of things actually, but what I am showing or bringing up, that people can still make money with simple things, that one only I am trying to teach first. Just master 1 or 2 things, master it properly. You people can do really good, people can earn a lot of money. सर छोटा रिकॉर्डिंग अलग से BBMA की भाई फिर से रिकॉर्डिंग. I have put the thread. थ्रेड पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा एक्चुअली, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था. PSC BBMA is for only for intra. If you try to do in hourly, it might not be helpful. ये रहा hourly का चार्ट, आपको मिलेगा ही नहीं ट्रेड एक्चुअली. ये रहा डेली का चार्ट, you will not get trade actually. But if you're doing it intra, 5 minutes, 15 minutes also doubtful, but 5 minutes you can get trades, good trades, I will say. See, look at the volatility, what I told. It will go up, it will come down, it will go up, it will come down, like that only today it will go. What has happened to our spread? Let's see. 92 rupees with the very big range. We are good, still doing good. Those who wanted to do within a range, they can earn this. By the way, I've closed my yesterday's overnight position. Somebody might have been thought ki market will crash, but I have taken a contra position. In morning it opened above 16,100. I closed it in green. Yes, Nagendra ji. Sir, I just wanted to know that basically in your trading journey, you are only using these 2 setups for your day-to-day trading? No, I use a lot of other things also. But what I'm teaching, I'm doing that judiciously. These are first my basic, what you call, my first strategies, first setups.
what I had used actually, and this has given me good money. Other than that, I have been using a lot of option strategies or intraday support resistance lines, or like how to somebody has asked volume thing. Volume also I see where to book. Usually those things I do, but these are mainly my, you can tell, my main setups, one of the main setups. Okay, so if I can ask, I mean, what kind of setup, I mean, you are using more often these days? Or what strategy you follow more currently? I am into totally option selling, and even if you see the 5 EMA thing, I am very much dedicated to 5 EMA. You can tell that 5 EMA is one of my forte. Okay. BBMA intraday. So, sir, in selling, you play directional or you? Yes, directional. I'm a directional player. But Okay. yes, on Wednesdays, like today itself, I told the Bollinger Bands is very huge. So today may be a intraday, one may earn some good money if they are doing strangles, not straddles. I am basically a 90% directional player. Okay. I do see what I did. I'll tell you. I think yesterday also you would have seen. Let me go to my Nifty chart. Mostly I do things in index only. This is my chart, right? This I showed yesterday also. This is one trend line I told. If it closes below this, then I'll go short, or I'll exit. It didn't close. And now also it has come and taking support as a at this trend line. So what I'll be doing, I'll be shorting puts here and hedged puts actually. If I see a support here. So if it goes, that's a directional, right? I'm seeing bullishness here actually. Because of the, again, the Dow theory, what I've mentioned. Let me go again. This is the one, these are the trailing, these are the trailing, these are the trailing lows, this is the trailing low. So until this low is broken, I'll be on the bullish side. Bullish means I don't see this to be broken. So if I short here, this options, this puts, so I want it to become zero. Not zero, I take it as 80, 70, 80%, but like that. But I will not short here put on high. Here I have mentioned in the group also that this may be a swing top. So I'll try to short calls here. What I have done, I have mentioned in the group also. Somebody has asked me 16,300 calls I have shorted. And once yesterday it has come here, 16,100, 16,000 puts I have shorted. So actually then it has become a strangle. But 16,300 puts I have calls I have exited here. And then I have shorted 16,000 puts. So I am a directional player itself. I am not a non-directional player. So, sir, in future, can can we expect you to also teach us price action? I'm not good at it actually. I can see what everybody is seeing. No, the swings. Only marking the swings I know. Marking the swings and which point to which point I can just draw a trend line. But those are all what you call as discretionary. Okay. See, मैं आपको सिखा सकता हूँ. I can tell like this. Even you are also seeing the same thing. On that basis only, I'll be doing that my trades. So I can share my trades on what basis I am doing. But I may not be good in teaching actually these things. Okay. So, for example, sir, how do you arrive at your support and resistance lines? Or, for example, you have drawn this trend line. देखो, पहला चीज है, first thing, first of all, I try to find if there is any channel going on. इसमें क्या किया? Yesterday, our channel was something different. I think like this. इसको हमने connect किया. I think like this only. I don't remember. इसको connect किया
एंड देखा कि ये कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो मैंने चैनल ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट देखा ये इधर ही सपोर्ट लिया, सो दिस एक सेकेंड, सो दिस द चैनल इज गिविंग मी ए कंफर्मेशन। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ बट क्लोजिंग उसके अंदर दिया, इसके बाद ओपन हुआ ऊपर, ऊपर गया, मिडल चैनल के मिडल लाइन से रिजेक्ट किया, लेकिन आके क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया, अगेन नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, ऊपर क्लोज दिया। सो दिस चैनल इज इंपॉर्टेंट नाउ। वो मैंने जस्ट ड्रॉ करके देखा कि एक चैनल बन रहा है मार्केट का एंड इट इज इंपॉर्टेंट। सो whenever it is trying to go, either it will get rejection at the midline or the top line and it will get a support at the low line. अब हम लोग क्या करते हैं ना, चैनल को ऐसे ही रख देते हैं, बट यू शुड ऑलवेज व्हाट यू कॉल, चैनल को मॉडिफाई करना चाहिए, चैनल को मॉडिफाई या ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, आज देखा कि usually yesterday as per this channel the price closed below this, so मेरा तो शॉर्ट हुआ ना इसके नीचे एक्चुअली, बट मैंने थोड़ा सा एक ट्वीक किया, जस्ट चैनल को थोड़ा पुल डाउन किया, सॉरी ऐसे नहीं, एक मिनट, हाँ जस्ट मैंने इधर इधर था, एक छोटा पुल डाउन करके देखा, इसको कनेक्ट किया, इस लो को देखा, नाउ इट इज अगेन गिविंग ए गुड सपोर्ट, इधर सपोर्ट बना, अगेन दिस इज द सपोर्ट, मैंने पूरा मेंटेन किया जो पहले था, नाउ दिस हैज बिकम द सपोर्ट, दिस हैज बिकम द सपोर्ट, दिस एग्जैक्टली टुक द सपोर्ट हियर। सो ये मेरा कंफर्म किया कि this is the channel what is going, plus ये higher connect किया, and if we see it is also taking resistance and support at the midline, ये midline का support है, ये midline का resistance है, ये midline का support है, इधर resistance दिया, ये support है, ये support है, ये resistance है, ये resistance है। So this midline is also getting important now, and currently if you see today also it is taking a support here. If it is taking a support here, then well and good. If it is broken and today एक red candle ऐसे close किया, तो हम इसके नीचे short करेंगे, because this swing low is broken. हमारा target होगा next swing low, जो कि either ये रहेगा या ये रहेगा। So step by step one should go. Market doesn't fall कि straight एक line में आ जाता है, इतना बड़ा हो भी सकता है, but we should go step by step. So for me now this trend, this channel has become important. अब आते हैं trend line पे, जो मैंने draw किया है उसको कैसे draw किया। Again मैंने देखा ये एक high बन रहा है, इसको इस high के साथ connect किया, तो ये एक हाई बना, इसको पहले इसके साथ कनेक्ट किया, तो देखा ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया तो ऊपर गया, बट मैंने फिर ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई किया, द रीसेंट स्विंग हाई, दिस वाज द रीसेंट स्विंग हाई, इधर मैंने टच किया तो देखा ये इधर टच किया, एंड नेक्स्ट डे दिस गॉट अ सपोर्ट हियर, yesterday closing also was above this trend line, today again this trend line should act as a support. मेरा दो कॉन्फ्लुएंस आ गया, मेरा चैनल का सपोर्ट है इधर, प्लस दिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो आई एम कॉन्फिडेंट एज पर प्राइस एक्शन कि दिस शुड टेक सपोर्ट हियर। अगर आज क्लोजिंग इन दोनों के नीचे हुआ तो देन आई विल गो शॉर्ट, आई स्टार्ट शॉर्टिंग ऑल द ऑप्शंस ऑन टॉप ऑफ दिस। ये मेरा प्राइस एक्शन थ्योरी है। तो सर आप बेसिकली पोजिशनली ज्यादातर खेलते हैं? यस, आप देखो मेरा स्टॉक्स का भी जो है सो पोजिशनल है, क्योंकि पोजिशनल में बड़ा पैसा बनता है। तो इसमें सर कोई डे आप अवॉइड करते हो क्या कि इस दिन मेरे को ओवरनाइट नहीं कैरी करना है? नहीं, नथिंग लाइक दैट, नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि Even on events? मैं बिलीव करता हूं ना कि
हाँ इवेंट्स जो बोल रहे हो, मैं बिलीव करता हूँ कि जो इवेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं जो प्री डिटरमाइंड इवेंट होते हैं, जैसे मान लो बजट हो गया या कोई बोल रहा है सीपीआई का डेटा आएगा, भाई डेटा आएगा वो पहले से किसी को तो पता है ना, और इंटरनली जो डेटा शेयर करेगा वो लोग तो बहुत दिन पहले से डेटा बना रहा है ना, तो जो पंटर है उन लोगों किसी ना किसी को तो पता रहेगा वो डेटा क्या कर रहा है, तो वो बंदा पहले से पोजीशन बना के रखेगा और वो प्राइस में दिखेगा, छोटा सा छोटा चीज भी दिखेगा प्राइस में, आइदर वो वॉल्यूम में दिखेगा या ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा। और प्राइस अगर ऊपर जाना है तो मे भी धोखा दे, जैसे कल धोखा दिया, इतना बड़ा फॉल आया, बट कल फॉल का डेटा वाइज तो फॉल का उतना था ही नहीं कुछ एक्चुअली देखा जाए। और मेरा सपोर्ट पे भी, मैं अगर बोलूं, मैं सपोर्ट पे भी क्लोजिंग दिया, इसलिए मैं बोल रहा था ना सबको कि किसी ने बोला 1630 आ गया, मैं बोला नहीं ये क्लोजिंग देगा 1660 के पास, 16060 के पास, वो क्लोजिंग 58 पे दिया, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया आज। सो ये साइकोलॉजी है, ये पूरा मार्केट पैसे का गेम नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी का गेम है, वो साइकोलॉजी समझना चाहिए। अब मेरा ये ट्रेंड लाइन गलत हो ही सकता है क्योंकि ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। मे बी आप कुछ और ट्रेंड लाइन बनाओगे। आप एक चीज देखना, जब भी आप कोई भी किसी तरह से भी ट्रेंड लाइन बनाओ, आप अगर सोचते हो वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, वो आके एक ना दो बार सपोर्ट लेगा ही उस पे, आप सही होंगे एक या दो बार, तो वो सही टाइम का वेट करना है और ट्रेड करना है। तो कोई भी इवेंट हो, इवेंट पहले से किसी ना किसी को पता रहता है और वो पहले से पोजीशन बना के रखता है। अगर उसको गैप डाउन होना है, आपको डेटा में दिख जाएगा या आपको प्राइस में भी दिख जाएगा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। सो इवेंट्स को मैं खेलता हूं एक्चुअली, बट मैं कैसे जाता हूं, मैं हेज लेके जाता हूं। आई हेज प्रॉपरली, हेजिंग नॉट इन द सेंस मार्जिन के लिए, मैं अपना लॉस को मिनिमाइज करके जाता हूं। ये मेरा तरीका है एक्चुअली प्ले करने का। आप अगर देखो अभी सपोर्ट ले रहा, ये रहा ना ग्रीन लाइन, अगर मैं 45 मिनट्स में देखूं इस पे, ये देखो एक सपोर्ट लिया, एक 45 मिनट्स, अभी का 45 मिनट्स भी सपोर्ट ले रहा है। तो सर जो ये हेजेस आप लेते हो, आप नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है और आप प्राइस का सेंस लेते हो, तो आप उसको वापस क्लोज कर देते हो हेज नहीं नहीं, मैं पूरा पोजीशन को एक साथ क्लोज करता हूं, मैं हेज को क्लोज नहीं करता। हेज इस मेरा देखो, हेज को मैं अगर लेके जाऊंगा ना, मेरा तो पोजीशन ऑलरेडी आपका लॉस कम हो के है ना, तो मैं उसको, मैंने प्रीमियम तो दे दिया ना ऑलरेडी मार्केट को कि वो हेज कैरी करने के लिए, मैं, मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा लॉस इतना ही होगा। अब मान लो मैंने हेज हटा दिया और सडनली कुछ न्यूज आ गया और मार्केट गिर गया, तो मेरा तो एक्चुअल लॉस हो गया ना उस जगह पे जो मैं हेज कैरी कर रहा था। सो आई डोंट क्लोज एनी हेजेस, मैं अगर क्लोज करता हूं एक साथ सब पोजीशंस को क्लोज करता हूँ। ओके, तो सर हेज ऐसे भी तो हो सकता है ना, मान लो अगर मेरी कैपेसिटी है 10 लॉट्स की, हूं। कि मैं 10 लॉट्स का लॉस ले सकता हूँ। ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे लोग हेज बेसिस पे अगर खेलते हैं, तो मान लो वो इंस्टेड ऑफ 10-15 लॉट्स लेंगे और उसके बाद उसको हेज करेंगे। तो वाइस वर्सा, मतलब वी कैन प्ले बोथ वेज ना, आइदर वी, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ हेज आई वुड ओनली टेक 10 लॉट्स। वो ले सकते हो, देखो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि किसका कैसा कैपेसिटी है। मैं बहुत कंजर्वेटिव प्लेयर हूँ एक्चुअली, मैं नेकेड जाना पसंद ही नहीं करता फ्रैंकली, चाहे उसके लिए मेरे को हेज लेने के लिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े मैं दे दूंगा, बट मैं नेकेड पोजीशन लेके नहीं जाऊंगा। देयर आर मेनी पीपल जो बोलता है मैं 10 लॉट लेके जाऊंगा और निफ्टी का 500 पॉइंट तक मैं लॉस झेल सकता हूँ। देयर आर मेनी पीपल, आई नो a lot of people like that, 10 लॉट नहीं वो 100 लॉट में खेलते और बोलते 500 पॉइंट तक मैं शॉर्ट करता जाऊंगा। सो इट इज हिज कैपेसिटी, वो अपना कैपेसिटी अपने को लेना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि हर एक को हेज करना चाहिए, बट मैं करता हूं बोल के मैं सबको बोलता हूं कि अगर किसी के पास कैपेसिटी नहीं है टू कैरी द लॉसेस, एमटीएम लॉसेस, दैट पर्सन शुड हेज हिज पोजीशन
properly. Correct. आप अगर बोलते हो मैं 10 लॉट का लॉस ले सकता हूँ, फाइन, नो नीड टू टेक हेजेस. बट आप बोलते हो कि नहीं मैं 5 लॉट लेके जाऊंगा तो भी मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, 50 पॉइंट गैप अप दिखा तो भी, तो भाई नॉट एक्सेप्टेबल. वो लेने का ही नहीं है पहला चीज, वो ट्रेड ही नहीं लेने का. मैं वही बोला ना कि अगर कोई सो नहीं पा रहा है एक लॉट लेके भी, तो उसको वो ट्रेडर बनने का ही नहीं है. फिर वो Yeah. डर रहेगा, बट वो डर को निकालना है. वो डर निकलेगा तो ही पैसा बनेगा. ओवरनाइट अगर हम सोचते हैं ना, अरे हम शॉर्ट लेके जा रहे हैं, गैप अप हो गया तो, अरे हो गया तो ट्रेड ही क्यों लेने का, उतना अगर सोचना है तो नहीं Yeah, लेने right, का. sir. सो दैट इज माई वे ऑफ थिंकिंग कि भाई लेने का है तो लो, नहीं लेना, डरना है तो मत लो. डरोगे तो स्ट्रेस आएगा, बीपी बढ़ेगा, घर में झगड़े होंगे. भाई लेने का ही नहीं है तो फिर पोजीशन, घर में तो झगड़ा करने का नहीं है पोजीशन लेके. मतलब झगड़ा होगा मतलब स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस के वजह से झगड़ा होगा घर पे. सो व्हाई टू टेक पोजीशन. Yeah, that's correct, sir. तो वो मैं मानता हूँ एक्चुअली. तो मैं अगर देखता हूँ, मैं प्योर प्राइस एक्शन इंट्राडे अगर बोलो, इंट्राडे नहीं ज्यादातर, बट पोजिशनल मैं खेलता हूँ. और बहुत लोग पता है मेरे को, इस चैट में भी है, इस वेबिनार में भी है. दे नो हाउ आई प्ले. आई शॉर्ट एक्चुअली इन द मनी ऑप्शंस. मैं आउट ऑफ द मनी में खेलता ही नहीं हूँ. इन द मनी ऑप्शंस शॉर्ट करता हूँ एज पर डायरेक्शन, and then I hedge it with next week's expiry, calendar expiry. Calendar के साथ hedge करता हूँ, buy करता हूँ. So they know it. There are many people who are in this webinar now. तो I do it like that. क्योंकि मैं मेरे डायरेक्शन के साथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि क्या होगा. या अभी जैसे देखो सपोर्ट ले रहा है, मैंने बोला सपोर्ट लेगा, इधर से लेना चाहिए. अब वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. मेरा स्टॉप लॉस है कल का yesterday's low. वो जब तक रहेगा I will not be short. That is my view. Anybody wants to ask anything, they can ask, or we will take a 10-15 minutes break. Sir, why don't you trail your SL? किसमें भाई? मैं तो अभी पोजीशन लिया है. अगर which one you are asking, Satyam ji? Positional trade. Positional you are telling of stocks. Stocks it has to come to 1:2 में what to trail actually. Let's go and check what you call Indus itself, which is in profit today. Where you will trail your stop loss. Let's say you trail your stop loss to this swing high. Let's say 863. Tomorrow may be a gap up and then it will take out. So that's doesn't give any sense actually to trail. I will not trail. What I tell no, कि 50% book at 1:1 and rest 50% carry with the initial stop loss. Carry it, because positional if you are taking, there may be spikes or there may be opening or anything near to this and again it will come. So why should I give away my profit? Either I'll book my profit here at 1:1 or else I'll keep the stop loss like that. I don't believe in trailing. There is no swing actually has made. If I tell here, let's say, this is our trade, right? This is the first swing. This has come down. It may again go here. So if I keep my stop loss here, the closing might be here, but 1 week may take out my stop loss. I don't want to keep. I don't keep actually. This is my experience. Through experience, I have learned that it has to be a closing basis stop loss, because closing is determined by big players where they want to close. If opening doesn't matter at all where it opens, opening are been done by amateurs.
Closing has been done by professionals. This has been told always in the market. So we need to wait for closing. If let's say today IndusInd Bank closes above our entry price, it becomes a very bullish candle. No, it becomes a hanging man because it will be red and with a big wick. I'll wait for my stop loss. I always believe either stop loss or target. Other than that, nobody should see anything. Yes, it might hit SL if we keeping in system or trailing, and will miss the target. See, we have taken a position based on a price action theory. This is a dark cloud cover. It should come down, and it will come down actually eventually. But we may see whipsaws intraday. But if you keep positional trades, it will give you a target. See, here is the congestion zone also. So initially it has to come here. It will find out buyers here again, whether these buyers are strong or not. Then it may pull back. If these buyers are not strong, then market will go falling down and down. Just think the psychology of the other side, the other players, what they are thinking. If you know the psychology of that other guy, then you can excel in market. Think from the other's perspective, other side perspective. See it. Let's see it. Bond tough. Sir, one more question. So since I am specifically, new to this, so it's Okay. been almost, I would say, active trading. I have started only maybe 5-6 months back. Earlier it was on and off. So how much time do you think a person should give before he can expect, that positive things might start happening? See, I tell you, different person has different capabilities, right? We know that. For some, it may take 2 years. For some, it may take 5 years. For some, it may take 10 years also. So just give time in learning. I'll tell you my thing. I started active trading from 2017. And what I've been doing, I was going to office morning 7. I used to wake up. I have told this story also earlier. 9 o'clock, I will start from my house. My office was around 1.5 hours away. So I used to reach by car through traffic and all. By 10:30, I used to reach office, come back again in the evening by 8 o'clock, spend time with family. After 11, I used to sit looking at charts. From looking at videos, looking at YouTube videos or any other things, I used to spend time till night, 2 o'clock, 3 o'clock. I used to study like that. Study means looking at charts or learning from YouTube's what I'm seeing. Like that, I have given a lot of time actually. If I tell my hours of spending in the market, I'll tell those nighttime I was spending in the market. So one need to give a lot of time looking at charts, understanding how it's behaving, understanding what are the patterns. Then only one may excel. The market will start rewarding. But it has to come with dedication. It has to come with your experience. Earlier I used to just buy shares and keep it. I had been doing this from 2008. Buy it, keep it, buy it, keep it, like that. But active trading, if you tell, it has come after 9 years. 2017 I started doing actively trading. So I will tell anybody, don't look for quick fix solutions. It will never come. It has never come in schools. It has never come in our colleges. We had to spend time in the market, learning things.
spend your little bit of money and experience that whether you are doing correct or not. Put stop loss, put target and see. Like that only you can grow. You are 2-3 months, fine. Give 1 year, give 2 years. Maybe it's possible that within 2 years you become very excellent. But you have to give that time in the market. There is no shortcut actually. I know a lot of people. I know some people who are more than 15 years, 20 years in the market and they don't know a single thing. I know such kind of people also. But I know even those people who started in 2017 with me only, they are masters now. They are teaching people. I am not that master also, frankly speaking. But I try to show what I am doing. Chalo, anybody? We'll take a break for 15 minutes. मेरा गला सूख रहा है एक्चुअली. सर एक बार डेटा देख लो ना एक बार. किसका? निफ्टी का. निफ्टी का. मजाक कर रहा है निफ्टी. 5 मिनट में. और इसमें देखते हैं. मैं वही बोला ना, आज यही चलेगा एक्चुअली. ये देखो, इसी लाइन से रिजेक्ट सपोर्ट लिया. मे बी ये टूटेगा, बट ठीक है ना. देखो, मैं बोलूंगा ये मेरा मैजिक लाइन है, नथिंग. मैंने खाली ड्रॉ किया देखने के लिए और देखा सपोर्ट ले रहा है बस. ये मेरा दो देखो, जितना कंफर्मेशन आएगा ना, जितना कंजंक्शन आएगा उतना अच्छा है. नाउ आई विल टेल दैट दिस मे बिकम अ रेजिस्टेंस 16400. व्हाई? बिकॉज अर्लियर आल्सो it took resistance from here, plus it becomes a middle line also. So आप चैनल ड्रॉ करो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, थिंग्स विल वर्क फॉर यू. आप उसको फॉलो करो, आप लोगों को फॉलो मत करो. ये मैं एक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं. जरूरी नहीं है कि आप मेरे को फॉलो करो और यही करते रहो. नॉट रिक्वायर्ड. आप आपका चीज सीखो. मैं जो 5EMA सिखाया हूं, ठीक है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट. मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट में देखो. कोई कोई तो 15 मिनट में कर रहा है, 45 मिनट्स में कर रहा है. एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो 1 मिनट में कर रहा है 5EMA को ट्रीट. तो आपका मतलब व्हाट इज योर कैपेबिलिटी. यू try to understand from your inner side what you are good at. वो आप करो. मेरे को ये अच्छा लगता है, पोजिशनल 5EMA में आराम से मेरे को मिलता है पैसा, तो मैं वही करता हूं और वही मैं सिखा रहा हूं एक्चुअली. सो देखो, सपोर्ट लिया एंड इट विल टेक सपोर्ट. इट शुड टेक सपोर्ट. अगर अब ये लो, यस्टरडेस लो अगर टूटा तो हम नीचे जाएंगे. नहीं टूटा तो हम इसी एरिया में 16300 और 16000 के बीच में पिंग पोंग करेंगे हम, जब तक कोई सा भी रेंज नहीं टूटा. और वो हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट से भी देखा है. अभी कितना है? 16600. देखो, 80 रुपीज, 80 रुपीज, 160. पहले कितना था? 150 था. अब बढ़ गया एक्चुअली प्राइस, क्योंकि मार्केट गिरा था ना अभी थोड़ा. तो 170 था, 10 रुपए घट गया एक्चुअली. सॉरी, प्रीमियम खा गया ना 10 रुपए, इधर ही घुमा घुमा के इन लोगों ने. चलो, विल टेक ए ब्रेक. अब 11:30, 11:45 तक विल कम बैक. I'll have something actually by that time. ठीक है, चलो.
So guys, good morning. Vinay ji, same to you. Pritesh, according to data, 1650 is also above 1. So providing support, yes, we can say, but we don't see 50s. There is no liquidity in 50s actually. So we avoid looking at 50s. Am I audible? Pritesh ji, have I answered your question? Anybody wants to ask anything, they can raise their hands. They can type in chat. Excuse me. Okay. Arunji, sir, you take future in stocks overnight, but did you not take any hedge in option for overnight? Yes, I take. That's what I told. No, I do future trades without means naked. I know what is my capability. Also, I do take options trade where I showed you how I make that trade, same as futures. So I do options trade with hedge, same way for futures also. Let's say IndusInd Bank. I was telling, right? Where is IndusInd? Where it has got saved? Okay. 900. I will take the stop loss. Where is the stop loss, right? That point nearby strike you can buy as a hedge if you're taking position. Sir, for one lot future, how much is the money invested? That's the margin requirement of 2.5 lakhs approximately for one lot of future. So if you hedge it, it will come below 1 lakh actually. Even as your options trade, or I'll show it here. Let's say Axis Bank, I showed like this, right? So if you are selling Axis Bank futures at current price, your margin requirement is 2 lakh rupees. But if you hedge it with 700 ka call, buy 700 call, your margin comes 62,000, but your loss is also reduced. Now maximum loss is 30,000 if 700 is reached. That is at expiry. Other than that, it's at 12,000. Actually, if you see T plus 0 PNL on top, what is showing, no blue line, it is hardly 12 or 13,000 per lot. Stop loss is the option hedge. Yes, the stop loss point should be your option hedging position, option hedging strike. So what happened? Okay. Now, anybody else? Let's see what's happening. Data from full green to come slightly, nearly 15% is red. Short buildups are, just see,
We didn't know what is happening. Now short build up, IndusInd Bank, HDFC Bank, Bharti Airtel, TCS, ONGC, Reliance, HCL Tech. Short covering happening, Kotak, Cipla, BPCL, Grasim BPCL we booked. Long build up is happening in Hindustan Lever. I think today we'll hit a SLN, HUL, Asian Paints, because both are showing upside things. Rest, Maruti 0.5% up, nothing much. Axis Bank in long build up. Where is it? 1% up slightly. It's fine, no issues. Why we should not bother? Because stop loss is there in place. We should not bother about it. If stop loss hit, we should get out. We have earned good in earlier trades, right? So that should suffice. Now see the hodgepodge going on in the options. Nothing, no movement, nothing, all khichdi going on. Though call writers are more since morning, even intraday put writers are building up, but in Bank Nifty, the call writers are getting a slightly upper hand for now. 16,100 is at 0.7 PCR. If it doesn't increase, then we may close below 16,100. But 16,000 is also a good support. It's more than 4. PCR is more than 4. 16,200.26. So now ping pong is between 16,000 and 16,200. Let's see what's happening. See, the ping pong is going on. What I told no in the morning. See, Roshan, what you asked, how to determine the strike prices. See, the opening was like this. The range is almost like that only. 16,150, 16,200, 16,000. That's what I told. You can select the range like that and sell option. Most probably this range will be held till today afternoon. And if you go by price action also, it's the same thing. It is showing 16,200 is the range. People are shorting above 16,200 calls and shorting below 16,000 calls. Yes, so puts. Roshan, hopefully I have answered your question. There is nothing else going anywhere. Just a simple boring day. Today will be a boring day actually for trend players. No trades anybody will get. So don't waste your money trying to buy options. If you are buying, then book it. If you are buying as per any setup, book your trades as long as you go in profit. As soon as you go in profit or your as per your targets. So now some contraction happening. Let's see that contraction goes on. This is the range in Nifty, Bank Nifty. This is going to be the range. This is the current swing. This is the low swing. So it may try to be in this range, or this is the highest range. This is the lowest. So market may remain in this range. This is the inner range. Once it is broken, we may get some directional trade. Similarly here also. See, Bollinger Band is also contracting and it is making the same range, which is near to the yesterday's low actually. Bank Nifty is showing weakness.
but Nifty will try to keep itself within this range. So what else anybody wants to? I have told BBMA setup, daily commentary, what I'm doing. Anybody wants to ask anything, they can ask. Okay, I have allowed Abhishek ji. सर हम जो आपने जो वो स्ट्रेडल बनाया है वो इसी वीकली एक्सपायरी का है ना? यस यस, मैं दिखाता हूँ। और अगर सर अगर ये करना है अगले वीक का, तो हमें कैसे लेना पड़ेगा? क्या अगले वीक का रेंज क्या रहेगा? अगले वीक का, नेक्स्ट वीक के प्रीमियम पे जाओ, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। Where is the option? This is the option for 21st July. Currently ATM है 16100, प्राइस कितना है 159 और 175, कितना हो गया दोनों मिला के? 200 और 125, 325। सो 325 का दूर का ऊपर नीचे का बेच दो, तो 450 16450 या 16500 का ऑप्शन सेल कर दो, और नीचे का 750 या 700 का ऑप्शन सेल कर दो। वो रहेगा रेंज। वो एक एजम्पशन है बेस्ड ऑन करंट प्राइस। ओके सर, मतलब अगर ऊपर मार्केट जा रहा है तो अगले वीक का हम 16500 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। यस, वो तो एनीवे वो राउंड नंबर है, वो तो रहेगा ही। करेक्ट। और नीचे का 15700 रहना चाहिए। अब 15700 जाके देखते हैं क्या है रेंज, कुछ टेक्निकली कुछ रेंज है क्या उसमें, देखते हैं। वो तो है, आई नो 15700 15800 के आसपास तो ये रहा 15700 15800 का रेंज है, और ऊपर की तरफ 15500, तो प्रॉपर रेंज बन गया ये एक्चुअली। इसके अंदर रहना चाहिए। अब अगर फास्ट नीचे आता है तो उसको एक बाउंस मिलना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन देखे तो मान लीजिए वो एक बड़ा सा कैंडल बनाता है रेड, तो वो इधर आके एक बाउंस मारेगा ही। ओके। ये हॉरिजॉन्टल अगर हम सपोर्ट भी ड्रॉ करें, वो इधर आके एक बाउंस मारना चाहिए। फिर वो एक और बार आएगा, दूसरी बार टेस्ट करेगा, फिर एक छोटा सा बाउंस देगा, फिर इसको तोड़ेगा अगर उसको नीचे जाना है तो। ओके। तो इसमें 3-4 दिन लग जाएगा। ओके ओके। और सर अगर आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और चैनल ड्रॉ किया, अगर आज उसके ऊपर क्लोज होता है और सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाने के चांसेस हम कैसे देख सकते हैं? तो हम ये रेजिस्टेंस है ना ऑलरेडी, ये ओपन इक्वल टू हाई, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो आपका ये जो चैनल का मिडिल लाइन है ना, और ये लाइन प्लस ये रहा गैप फिलिंग एरिया, ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो मार्केट पिंग पोंग कर सकता है, ये ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, ऐसे ही करेगा। बट एक ना टाइम नीचे अगर आना है ना, तो उसको ये चैनल भी ब्रेक करना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करना पड़ेगा। ओके। और फिर ये लो भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही जाके हम बोलेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। अब अदरवाइज इस रेंज के अंदर ही खेला होगा, खेलते खेलते मे बी अगर धीरे धीरे करते वो ऊपर जाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाना लो का, स्विंग लो का। ओके सर तो हमें वो पता कैसे चलेगा कि मतलब चांसेस किस साइड के ज्यादा है? वो प्रेडिक्ट मत कीजिए, वही सबसे गलत चीज है एक्चुअली। हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए ना वो किधर जा रहा है। हम तो एक सपोर्ट ड्रॉ करके मे बी हमारा क्या बोलेंगे, हम सोच रहे हैं कि ये इसको ऊपर रहेगा, नीचे रहा तो हम नीचे का खेलेंगे, ऊपर रहा तो एनीवे हमारा पुट डीके हो जाएगा। यस। प्रेडिक्ट मैं आई एम टेलिंग, मतलब ये सबको बोल रहा हूँ, प्रेडिक्शन गेम में मत जाइए। प्रेडिक्शन करेंगे मतलब सट्टा खेल रहे हैं। यस। प्रेडिक्शन नहीं करने का, मार्केट को बोलने दीजिए मार्केट करना क्या चाहता है, बड़े प्लेयर क्या करना चाहता है,
बड़ा प्लेयर अगर ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है आपको दिख जाएगा, अगर वो नीचे लाना चाहता है तो लेटेस्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा। सो वैसा कीजिए, मतलब सी व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू, नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, कैन यू प्लीज शो BBMS setup example? I have showed what again? See, Chinmay ji, already this recording will be available, those who are attending. So just kindly go through the recording. I think 2 to 3 times I have already shown since morning. So maybe you are not there, I don't know. But later, again, I'll try to show one example, but in the second half. Because एक ही चीज बार बार बोलेंगे तो मेरे को भी ठीक नहीं लगेगा। Yes, Amit ji. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I just wanted to know, suppose someone wants to earn, like I'm talking now, I am an option buyer, but I'm talking in perspective of, like जैसे option जो sellers होते हैं, उनके हिसाब से market को अगर देखा जाए, क्योंकि mostly they are on a more risk and verge because they put a lot of money. Right. तो अगर जैसे मुझे रेगुलर पैसा कमाना है, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे रेगुलर एक सर्टेन अमाउंट सोचा हुआ है। सपोज करिए कि मैं 25 लाख से खेल रहा हूँ, जो माय कैपिटल इज 25 लाख एंड आई नो द, आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज मैं आईटीसी या बजाज फाइनेंस का या रिलायंस का जो स्टॉक है उसको बहुत सालों से, 1-2 साल से उसकी रेंज देखता रहता हूँ। ओके, फाइन। तो मैं प्रोबेबिलिटी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो क्या है कि जैसे अगर मुझे पता है कि रिलायंस की रेंज दिन में 200 रुपए ही रहती है दिन की, और आईटीसी की 230 से या 240 रुपीज से 280 रहती है, 40 रुपए। तो अगर मैं उसके नीचे का पुट और ऊपर का कॉल बेच दूं तो इसमें मतलब मैं इसमें रेगुलर पैसा कमा सकता हूँ, हो सकता। हाँ, अब 100 में से 20 से 25 दिन ऐसे होंगे जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर देखा है तो मैं कैन आई अर्न अ रेगुलर मनी इन दिस? You can to see, वो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, everybody has their own expertise. Like आप जैसे बोल रहे हो ना, मेरे को रिलायंस का रेंज पता है या आईटीसी का रेंज पता है, बट हाँ आप अगर इंट्राडे बोल रहे हो दैट्स फाइन, मे बी आपको 1 या 2 रुपए का डीके मिल जाएगा। नहीं, मैं पोजिशनली बोल रहा हूँ सर, पोजिशनली। पोजिशनली में आप अगर मतलब मंथली रेंज देखो, आप मंथली रेंज पे खेलो। राइट राइट, दैट यू कैन डू, मंथली रेंज इज फाइन। अगर वो ब्रेकआउट होता है मान लो मंथली रेंज का, देन यू एग्जिट दैट। मान लो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता, आप कॉल से एग्जिट हो जाना, पुट तो एनीवे पैसा दिया, आप नेक्स्ट शिफ्ट कर लेना। सो यू कैन डू लाइक दैट आल्सो। सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि एवरीबॉडी हैज देयर ओन एक्सपर्टीज, उसको अपने एक्सपर्टीज के साथ खेलना है। आपको जैसे इंटरेस्ट लगा कि आपको इस ऐसे खेलना है, तो आपको ऐसे दिखा है, मतलब देखो मार्केट या डेस्टिनी हम बोलते हैं ना, वो दिखाता है कि कौन कैसे ट्रेड कर सकता है, हमको वो जानना है कि हम कैसे करेंगे। राइट। आपको मे बी ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो आपको आपका एक्सपर्टीज पे ही खेलना है। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि मैं रेंज पकड़ सकता हूं, तो आप रेंज के ऊपर का कॉल पुट भेज दो एंड खेल सकते हो आप। और अब बड़े कैपिटल में ना आप लॉन्ग ऑप्शंस लॉन्ग करके नहीं खेल पाओगे, वो स्केलेबिलिटी नहीं आएगा। आपको बड़े कैपिटल में ऑप्शन सेल करके ही पैसा बना सकता है, बट वो पेशेंस के साथ बनाना होगा, वो पेशेंस पकड़ के बैठना होगा कि इतने दूर का मैं कर रहा हूं, वो तो एनीवे पैसा देगा, बट वो आपको कम मिलेगा, बट मिलेगा। राइट। और आपको अगर मतलब मान लो आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो मूवमेंट आने वाला है, सेम वे मैं जैसे ये एक्सप्लेन किया ना, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, 1 सेकेंड। दिस वन मेक स्प्रेड्स लाइक दिस। आप तो एनीवे ये रेंज है, 1 डेविएशन रेंज है, मान लीजिए आपने इधर का कॉल भेज दिया, इधर का पुट भेज दिया। अब आपको अगर मान लो आपको थोड़ा डर भी लग रहा है, तो आप नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी का सेम प्रीमियम का ऑप्शन बाय कर लो। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो आपका मतलब मार्जिन भी कम हो जाएगा, आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, और रेंज ब्रेक हुआ तो एनीवे आप अगर एग्जिट भी करोगे तो आपका लॉस उतना बड़ा नहीं होगा। राइट। तो मान लीजिए मैं सेम चीज बनाता हूँ रिलायंस पे। जी।
रिलायंस आप बोलिए कितने का रेंज, कहाँ आपके हिसाब से कहाँ सेलिंग होना चाहिए, मतलब कहाँ का पुट बेचना चाहिए, कहाँ का कॉल बेचना चाहिए, आप ये बताइए मेरे को खाली पहले। मेरे हिसाब से 2200 का पुट बेच सकते हैं, ओके 2250 का पुट बेच सकते हैं, और अच्छा। कॉल बेच सकते हैं 2500 या 2500 के ऊपर का। 22 का मैंने 9 रुपए का पुट बेच दिया, ठीक है, और हम्म। 2500 का, 2500 तो बहुत पास हो जाएगा ना। नहीं 2600 अच्छा 2550 या 2600। ठीक है, 2600 राउंड फिगर लेते हैं, तो जी ये जी। मैंने बेच दिया। अब इसका एक मिनट, 28 जुलाई का, ये तो जुलाई का आया, अब या अगस्त का। अगस्त का ले लो सर आप एग्जांपल हाँ के हाँ लिए। अभी अगस्त का, अब जी अगस्त का दिख ही नहीं रहा है। अब कितने का बेचा हम लोगों ने, एक मिनट इसको हम हटाते हैं। हमने बेचा 9 रुपए और 12 रुपए का। अब हमको खरीदना है 9 रुपए और 12 रुपए का। हमको पहले जाके ढूंढना है 9 रुपए कहाँ है। 7 रुपए 2000 का है, वो आप बाई कर लो। और नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आपको 12 रुपए का या 9 रुपए का देखना है। कॉल 7.5 रुपए का है। ये जुलाई का ही है ना, ये अगस्त का है। अगस्त का हम बाई कर रहे हैं और अगस्त जुलाई का का बाय सेल कर रहे कर हैं रहे हैं। टू फॉर द कुशन, मतलब सेफ्टी के लिए। यस यस। ओके। तो आप अगर ये करते हो ना, आपका हम्म। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 91%। राइट आपका रेंज क्या हो गया, 2169 राइट टू 2627, ये रेंज हो गया आपका। राइट। आपका मैक्स प्रॉफिट, या अगर इधर ही रह जाता है, आपका हम्म। एक लॉट पे 2800 रुपए का प्रॉफिट आएगा, एक हाँ लॉट सेट पे। तो राइट। आपका ऑलमोस्ट मार्जिन लगेगा, नॉर्मली आप अगर खाली सेल करते इन दोनों को 2.5 लाख हाँ के करीब मार्जिन लगता। राइट। तो आपको अभी लगेगा, लेट्स से मैं ऑप्शन में मार्जिन का बना के बोलता हूँ, जी कितना क्या रहेगा। रिलायंस ऑप्शन चेन ऑफ 28 जुलाई, हम लोगों ने 2600 का कॉल सेल किया कॉल सेल किया। एंड 2200 का पुट पुट। सेल किया। यूजुअली आपको मार्जिन लगे 1,14,000, जी बट एक एक लॉट पे सर, एक एक लॉट पे। एक लॉट सेट का, या हाँ, मतलब एक लॉट आप सेट का जी। एक लॉट सेट का अपने स्ट्रैंगल बनाया ना, तो उस हिसाब से। सो हम्म आपका देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 81% हियर, एंड आपको एक लॉट पे 5,000 रुपए मिलेंगे, 1 लाख पे 5,000 ही मिलेगा, अराउंड 5%। अब हाँ हम हेजिंग करते हैं हाँ 25 हेजिंग अगस्त करेंगे। का। हम्म 25 अगस्त का हम 2000 का पुट बाई करते हैं 7 रुपए का, और हम 1900 वाला 7 रुपए का कॉल बाई करते हैं अगस्त का। मार्जिन कितना हो गया, 71,000। हाँ आपका काफी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया थोड़ा, हाँ पर आप देखिए क्योंकि ये घट गया है ना मार्जिन आपका, तो हाँ आपका आरओआई बढ़ गया है। राइट। आपको 6,100 रुपए मिलेगा, वो तो मैक्स अगर इस कोने पे आया, फिर भी बीच राइट में रहा तो भी 3,000 रुपए 4,000 रुपए, इससे ज्यादा ही मिलेगा एक्चुअली। आईवी भी डिक्रीज होगा, बहुत कुछ होगा। राइट। सो दैट इज वन थिंग, उसमें आपको हम्म अनलिमिटेड लॉस रहता है अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप होकर मूवमेंट दे रहा है। हम्म बट इधर आपका मैक्स लॉस कैप कैप हो गया, आपको एनीवे पता चल जाएगा, अगर इतना सा भी 2100 के पास आया तो रेंज ब्रेक हो गया, आप निकल जाओगे ऑलरेडी। तो 9,000 राइट। रुपए लॉस ही रहेगा एक्चुअली, आप देखोगे तो 9,000 या हाँ 12,000 ही रहेगा। राइट। सो यू कैन प्ले लाइक दिस, आइदर नेकेड तो मैं कभी नहीं बोलता ऑप्शन शॉर्टिंग, जी। उसके साथ एक हेज रखना ही है। और अच्छा सर। क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है, हाँ आपका अगर ग्रीक्स देखोगे, ग्रीक्स इन डेसिमल, आपका 2 0 डेल्टा थोड़ा नेगेटिव में जीरो के पास है, बट इट इज स्लाइटली पॉजिटिव आल्सो, बिकॉज दीज विल मूव वेरी फास्ट एक्चुअली अगस्त राइट का, राइट जब कोई बड़ा मूवमेंट देगा तो। राइट। जुलाई वाला इतना मूवमेंट नहीं देगा क्योंकि थीटा विल इफेक्ट मच, बट ये राइट। बहुत बड़ा मूवमेंट देगा आपको।
सर एक्चुअली वैसे ये डेल्टा होना कितना चाहिए जो आपने ये दिखाया अभी नीचे 0.0264 आप दिखा रहे हो आपने पोजीशन? इधर क्या किया, आपने डेल्टा भी 0 बना दिया ऑलमोस्ट, एक्चुअली 2 डेसिमल तक लेते हैं। अच्छा आप ऐसे करके आपने डेल्टा को 0 बना, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना दिया। आपने गामा न्यूट्रल बना दिया क्योंकि एक्सपायरी से बहुत दूर है, एनीवे वो न्यूट्रल ही है। आपने वेगा न्यूट्रल भी बना दिया ऑलमोस्ट, मतलब वोलेटिलिटी का भी इफेक्ट नहीं रहेगा इस पे। आपका थीटा का इफेक्ट रहेगा, थीटा विल डिक्रीज, राइट। थीटा इज पॉजिटिव, बाकी रेस्ट आर ऑल नेगेटिव, तो और वो भी थीटा 0 के एक्चुअली पास। सर इसमें थीटा पॉजिटिव होना चाहिए हम लोगों के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए। हाँ, अच्छा, यस। मिनिमम कितना होना चाहिए सर इसमें? मिनिमम मैक्सिमम का नहीं है, देखो अच्छा, आप जो अच्छा, सेल अच्छा। किया ये जुलाई वाला, हाँ, आप देखो थीटा इज पॉजिटिव इन दिस, राइट, राइट? तो आप थीटा खा रहे हो इसमें, बट समझ गया, आप जो अगस्त का कर रहे हो उसमें थीटा दे रहे हो, दे रहे हैं, तो वो माइनस में है। तो राइट, ओवरऑल जाके वो पॉजिटिव है आपका थीटा। पॉजिटिव है। तो आप जितना दिन रखोगे वो उतना हम्म, दिन आपको थीटा का बेनिफिट देगा। राइट, राइट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। सपोज करो जैसे मैं ऐसे मंथली और डेली इंडेक्स का चार्ट चेक करता हूँ, तो मैं देख रहा था कि जैसे सपोज करा कि मेरा जैसे मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अब मार्केट ने टॉप आउट किया था 18,500 के आसपास, निफ्टी ने 18,630। हाँ 18 के आसपास, 18,600 के आसपास। तो तब से मार्केट ओवरऑल एक बार फिर आया तो 18,500 या 300 के आसपास आया, वो जनवरी फरवरी में, नवंबर के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया, मतलब लोअर लो बना रहा है। राइट। तो लोअर लो जब बना रहा है, तो जैसे मेरा पोर्टफोलियो सपोज करिए 20 लाख का या 25 लाख का, मेरे पास 5 या 6 स्टॉक हैं। तो अब अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया, अब मैं अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा हॉराइजन है 5-7 साल या 10 साल 12 साल। तो अब मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं मेरे, उसमें 5 या 10 स्टॉक्स में, इसमें मुझे कुछ डिविडेंड भी मिलता है, तो अब मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसमें इंडेक्स को शॉर्ट करूं या मैं उसका पुट खरीदूं, तो कितना खरीदूं, मतलब कितने रुपए का, कैपिटल का, इन परसेंटेज? आपको 10% का रखना चाहिए। 10% का? यस। अच्छा, आपको मतलब 2.5 लाख का, अगर 25 लाख है मान लो, तो हाँ 2.5 लाख का पुट रहना चाहिए। बट 2.5 लाख करते हुए आप देखो ये अक्टूबर से कर रहा है, तो आपका ऑलमोस्ट इट विल बी, मतलब मेरा फंडा क्या है ना, जी मैं बोलता हूँ मेरा फंडा बोलता हूँ, जी जी मान लो टॉप हुआ, टॉप जी, तो पता नहीं सबको, ठीक है, हाँ बट आई वॉज फाइंडिंग अ टॉप, एक्चुअली देयर वाज अ डाइवर्जेंस। हाँ, सो मैं क्या करूंगा, मान लो उसी स्टॉक के फ्यूचर को शॉर्ट कर दूंगा। ओके ओके, मतलब ओके। पोर्टफोलियो में जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट है, सपोज मेरे पास टाइटन ये है, टाइटन मेरे पास सपोज करिए कि 15 लाख का है, हाँ। तो और अगर मुझे पता लग गया है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, तो मैं जाके उसका फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा। यस। ओके, यस। और वो भी जैसे मेरा 15 लाख का टाइटन है, तो मैं उसमें 10%, 1.5 लाख का शॉर्ट मारूंगा। आप नहीं, अब मैं इंडेक्स के लिए बोला था, आप जैसे इसके लिए आए हो। हाँ, अब मैं स्टॉक के लिए। बोलता हूँ आपको, आपको आपके पास अगर एक लॉट का शेयर्स है, जी, टाइटन का एक लॉट कितना होता है, आई थिंक, एक मिनट। टाइटन का मैं चेक कर रहा हूँ सर। टाइटन, टाइटन कहाँ है? टाइटन का एक लॉट मिनट सर, टाइटन का एक टाइटन लॉट है 375। 375। जी तो सर। आपको एक्चुअली उसका आधा, मतलब आपके पास मान लीजिए शेयर्स कितने होंगे, 15 लाख का होगा तो अराउंड होगा जो भी है। मैं बोलता हूँ देखिए, नॉर्मली 375 इंटू करंट प्राइस ऑफ टाइट, अभी कितना चल रहा है? अभी सर 2100 के आसपास है, 2100 2100। इंटू 375 कितना है? 2100 2100 इंटू इंटू 375। 6 लाख, 7 लाख, 7 से 8 लाख रहेगा नोशनल वैल्यू। हाँ सर, 7,87,000, 8 लाख हाँ, के आसपास। 8 लाख के आसपास है। तो हाँ। आपके पास अगर 15 लाख, मान लीजिए 16 लाख है, तो आप 2 लॉट टाइटन शॉर्ट करोगे, दो नोशनल लॉट वैल्यू। यस। फ्यूचर में सर? फ्यूचर में। 2 लॉट? यस, 2 तो लॉट्स। सर अगर 2 लॉट करे तो उसके लिए तो पैसा काफी लगेगा। 5 लाख लगेगा।
अच्छा, तो हम लोग फिर उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या? हम लोग उसकी कॉल स्ट्रेटेजी खरीदेंगे नहीं, ताकि उसका मैं बोल रहा हूं मैं एक्चुअली जी व्हाट, सपोज आप देख रहे हो, ठीक है, मैं टाइटन का ही चार्ट खोलता हूँ, जी आई 1 मिनट। एक्चुअली मेरा बना हुआ देखिए सो एनीवे, अच्छा मैं क्या करूं, देखो इसमें 5 EMA वाला भी आ गया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। जी आप मान लो दिख गया कि कुछ तो हो रहा है गड़बड़ इधर, जी कुछ तो हो रहा है, आप शॉर्ट कर दो, आपके पास पोर्टफोलियो है 15 लाख का, तो आप हाँ 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो, उससे हम्म इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका। तो अच्छा आप अगर करोगे, मान लो ये इसको कैरी फॉरवर्ड किया आपने जी पूरे मंथ का, ये कब हुआ हम्म था, ये 17 मार्च को हुआ था, 21 मार्च को हुआ था, तो हाँ मार्च का नहीं, आप मार्च अप्रैल का शॉर्ट करोगे, 20 के बाद आप हमेशा नेक्स्ट फ्यूचर का देखना। तो अच्छा नेक्स्ट फ्यूचर कहाँ पे आता है, अगर मान लो अप्रैल का भी किए, 29 अप्रैल आप इधर निकले 2467 पे निकले, जी राइट। अगर मान लीजिए इधर ही किए आप 2689, 200 रुपए आपको मिला, उधर हम्म आपको घाटा हुआ 200 रुपए का आपके स्टॉक हाँ पे। हाँ आप इस जगह पे जब निकले, निकल के आपने फ्यूचर फिर से शॉर्ट किया ऑफ नेक्स्ट एक्सपायरी, बट इस जगह पे निकल के आप सेम जो भी अमाउंट मिला आपको प्रॉफिट इन फ्यूचर्स, हाँ आप हाँ उसको आपके स्टॉक में ऐड करोगे, समझ गया मैं। तो उससे आपका एवरेज प्राइस कम होगा। ओके, अच्छा आप बोल रहे हैं कि जो जो मुझे फ्यूचर शॉर्ट करने से जो मुझे प्रॉफिट मिला प्रॉफिट उसको मैं मिलेगा, अपने उससे मैं स्टॉक खरीद लूंगा। उससे वो स्टॉक खरीदोगे आप। अच्छा, ताकि द नोशनल लॉस और द पोजीशन विल बी एवरेज्ड। यस, उसका अच्छा प्राइस घटता जाएगा। मान लो सेम वे में अब इधर आया, नीचे आया, हम्म आप सोचो 1900 आपने मे भी खरीदा होगा 800 में, 700 में, लाइक दैट, राइट आप तो राइट प्रॉफिट में रहोगे, बट वो प्रॉफिट तो लॉस में आ रहा है एक्चुअली, राइट प्रॉफिट घट रहा है। बट घट रहा फ्यूचर है। शॉर्ट करके आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, और हम्म उसको आप एवरेज कर रहे हो, अपना प्राइस, इवन आप शेयर्स भी बढ़ा रहे हो, और प्राइस मतलब आगे जब पहल बाद में बहुत ऊपर जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ेगा ना, अब उस राइट हिसाब से वो आप खेल पाओगे उसको। अच्छा ठीक है सर। That's way I think, that's why I also do. I have for IOC, I have for ITC, NLC, हाँ बहुत क्योंकि बहुत चीजों का है, क्योंकि तो सर I do अपने it like that. अब जैसे कोई 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है और अगर वो अपना सामने देख रहा है कि उसका द वैल्यू इज गोइंग डाउन, तो उसको सेव करने के लिए एटलीस्ट वी हैव टू टेक अ कुशन ना, कि उसको थोड़ा, क्योंकि अब मैंने लिया 500 में, मेरी एवरेज वैल्यू सपोज 527 है टाइटन की, अब वो चली तो गई 2700, तो मैंने करेक्ट, उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, मुझे करेक्ट, डिविडेंड भी मिल रहा है सब है, हाँ अब हाँ वो हाँ नीचे आ रहा है तो इट्स अ ह्यूज लॉस, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि लॉस है, इन्फ्लेशन भी तो ऐड होता है ना उसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए इसीलिए तो वो फ्यूचर्स FNO में है, और बड़े स्टॉक को ऐसे ही बहुत लोग खेलते हैं। जब देखिए आप, अगर मैं इसमें बोलूं मैं कैसे खेलूंगा, ठीक है, जी पहला चीज है, मेरे को ये पहला वीक दिखा, जी ठीक है, दिस इज अ पिन बार sort of राइट thing. I will go and actually I'll short future here. अच्छा I'll not short future anywhere else. I ओके will ओके go, ये ट्रिगर हुआ पोजिशनल में, डेली में मैं शॉर्ट करूंगा, उसको कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं जाता। देखिए स्टॉप लॉस के ऊपर गया मतलब मेरा तो जो स्टॉक है वो तो प्रॉफिट देगा ही ना, जी और फ्यूचर स्टॉप लॉस पे क्लोज देगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब इधर अच्छा ये 1 महीना रहा, 1 महीने बाद इधर आया, ठीक है फाइन, मैं निकाल दूंगा। अब इसने एक हैमर बनाया इधर, जी ये देखिए इस पे, जी ऑन 29 नवंबर, मैं एक्चुअली जी वो हैमर पे ही निकल जाऊंगा, इधर मैं निकलूंगा, और मैं शॉर्ट नहीं करूंगा अभी। अच्छा आई ओके वेट हियर, व्हेन आई सी अगेन ए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब जा रहा है ऊपर तो मेरा तो स्टॉक एप्रिसिएशन हो रहा है ना, मैं इधर से इधर जो कमाया वो तो मैंने हाँ स्टॉक में शेयर में डाल दिया, मेरा समझ गया 575 से एवरेज अभी मान लो 600 रुपए हुआ, हाँ तो मेरे शेयर्स भी तो बढ़ गए एक्चुअली। राइट अब फिर ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऊपर जाके फिर से ये कुछ कुछ तो कांड किया इसने, हाँ इधर से मिला, मान लीजिए ये कुछ मिला ही नहीं, इधर कुछ बनाया नहीं, बट एक्चुअली हाँ दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन, मैं मार्क करके रखा था। राइट तो फिर ये देखिए इधर बनाया फिर से एक, राइट इधर आप शॉर्ट कर दीजिए, नीचे आया, बहुत दूर चला गया EMA से, एक ग्रीन बनाया इधर, तो एटलीस्ट 3 दिन में तो आपको कुछ मिला, वो आप ऐड कर दीजिए फिर आपके स्टॉक में।
अच्छा अच्छा आप सर ये भी बोल रहे हो कि एवरी टाइम व्हेनेवर द स्टॉक इज इन अपर ट्रेंड यस डोंट शॉर्ट एंड ट्राई टू राइट दैट गेन एंड Yes. जो आपने शॉर्ट करके पैसा कमाया वो हमेशा स्टॉक में डालते जाओ स्टॉक में ताकि ऐड करते रहो, उसी स्टॉक में ऐड करते रहो। हाँ उसी स्टॉक में। हाँ। ओके ओके सो सेम समझ चीज गया। देखिए, ये जा रहा है ऊपर जा रहा है, एंड अगेन इधर उसने ऊपर एक पिन बार बनाया, अच्छा and ठीक है। very far away from EMA. This EMA you can use, anybody can use in many things actually. इधर Right. बनाया, इसके नेक्स्ट डे उसने फिर से बनाया, बट वो रेडी था, नेक्स्ट डे भी रेड था, आप इधर शॉर्ट कर दो जब Right. तक ये देखो गिरता गया गिरता गया गिरता गया, फिर गिरता गया, फिर इधर बनाया 5 EMA से बहुत दूर एक ग्रीन बार। Right. इतना दूर तो आपने खेल लिया ना, कितने से, मान Right. लीजिए 2700 से 1900 तक, हाँ 600 हजार, रुपए 600 700 रुपए, 700 रुपए मिल 700 गया। रुपए का जो प्रॉफिट मिला वो आप रोल ओवर भी कर सकते हो, अच्छा वो सर ऐड कर इसको दो। आपने बोला कि फ्यूचर को 20 तारीख के बाद एवरी मंथ की दूसरे में रोल ओवर हो जाओ। हाँ यस। अच्छा और सर फ्यूचर में रोल ओवर सपोज अभी जुलाई चल रहा है तो अभी 13 है, मैंने कोई फ्यूचर खरीदा या शॉर्ट मारा है तो उसको 20 को मैं निकल के उसको रोल ओवर मतलब नहीं, क्या? आप अगर मान लो कि अभी जुलाई चल रहा है, आपने जुलाई का फ्यूचर शॉर्ट किया है मान जी लीजिए, जी तो जुलाई का किया तो मैं बोलूंगा 20 से 22 तारीख के अंदर उसको बुक करके आप अगस्त में चले जाओ। मतलब हमें उसे बेच के फिर से अगस्त में खरीदना पड़ेगा। हाँ, आप अगर अच्छा लॉन्ग नहीं हो, आप शॉर्ट कर रहे हो एक्चुअली, देखो जी आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है, जी तो आप उसके अगेंस्ट में हेज के लिए आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो मतलब आप जुलाई का शॉर्ट किए हो, तो हाँ 22 तारीख को जाके आप जो भी प्राइस मिल रहा है उसी हाँ टाइम पे आप बाई करोगे, और उसी हम्म। 1-2 मिनट के अंदर आप अगस्त का शॉर्ट करोगे। अच्छा अच्छा सर जैसे अब मेरा पोर्टफोलियो 25 लाख का है तो अगर मैं हाँ, कुछ शॉर्ट कर रहा हूँ सेम स्टॉक को हम्म जो मेरे पोर्टफोलियो में है तो उसके लिए मुझे कुछ मार्जिन मतलब कुछ अपने कैपिटल से भी देखिए, मार्जिन पहला लेके चीज, आपका अगर कैपिटल है आप उस अमाउंट को प्लेज करके मार्जिन ले सकते हो। जो हमारे शेयर्स हैं उसको यस यस। तो उसमें सर कितने तक का मिलता है कि हर स्टॉक का अलग है? 80%, 80% एवरेज ऑन, मतलब 80% का मिल जाता है। मिल आपका जाता है मान लीजिए 15 लाख का टाइटन है मान लीजिए, जी। तो मैं आपको दिखाता हूं कितना मिलेगा अच्छा ये भी हम जीरोधा चेक में। कर सकते हैं सर? यस, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर में एक इक्विटी, मार्जिन में इक्विटी ये भी का, रहता है क्या? इक्विटी, सॉरी इक्विटी में रहेगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स प्लेस्ड फॉर मार्जिन, these are the approved list of stocks by SEBI, जिसमें आपको जो मार्जिन मिलेगा। अब मान लीजिए आप टाइटन का बोल रहे हो, ठीक है, सर आप ये लिंक शेयर कर देंगे सर ग्रुप में? अच्छा ठीक है, कंट्रोल F, कहाँ गया, कंट्रोल F, टाइटन, हाँ टाइटन नीचे आ गया, 16 मतलब 16.62 का हेयर कट है, आपको मार्जिन मिलता है 83.38% का। अच्छा मतलब अगर 100 रुपए में 83% मैं मार्जिन ले सकता हूँ? यस, और ओके उससे ओके आप उसी स्टॉक, हम लोग एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग ऐसे ही करते हैं, हम लोगों के पोर्टफोलियो में ही रहता है वो, हम मार्जिन प्लेज करते हैं एंड देन वी डू ऑप्शन सेलिंग। तो सो प्लेज के लिए सेम सर चीज कोई स्पेशल तरीका है क्या? प्लेज के लिए क्या तरीका क्या है? आपका ब्रोकर कर देगा, देखिए जीरोधा में बहुत इजी है, अच्छा आपका ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ब्रोकर को बोलेंगे तो वो प्लेज करेगा सीडीएसएल के थ्रू, तो ओके आपको नेक्स्ट डे मार्जिन, नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मार्जिन दे देगा, वो ब्रोकर करेगा, करके देगा, एंड एवरी ब्रोकर इज सपोज टू डू ऑल दोस थिंग्स। अच्छा ठीक है क्योंकि मेरा एचडीएफसी में है सब। ओके ठीक है, कुछ बोलूंगा नहीं, बट ठीक है, नहीं आप एक बार मेरा पूछ के देखिए। मेरा सर बहुत पुराना है लेकिन मतलब काफी पुराना है आई नो, एचडीएफसी। आई नो, इट्स फाइन, इट हैपेंस, मेरा भी था एचडीएफसी आईसीआईसीआई में, मैं एवरीथिंग आई हैव शिफ्टेड टू जीरोधा नाउ, everything from last 6 years I am trading in Zerodha So itself. sorry to cut in between. Even HDFC, you can pledge it. You don't even need to Okay, call them. The option is there in the software itself. okay, ओके ओके बढ़िया है, So बढ़िया ओके सर once you need to go into your the stocks, like there is a tab wherein all your holdings will be visible. ओके You need to you need to push a button, like say for example, to pledge it. ओके That's it. It's a very simple process. Even ओके though सर HDFC is absolutely expensive,
but you don't need to call them. The option is still there. Actually, sir, for me, why I don't trade in that, and reason is it is cheaper to me because it's a corporate account of my wife, and it's a very old account. So I have their shares also. So for me, it is like you No, can like say sir has mentioned, for pledging me is it is lesser absolutely than easy. zero, actually. Still, I'm just letting you know. Yeah, it's fine. You can do it like this. आप margin लो and आपके 15 लाख पे आपको एटलीस्ट अगर मान लो 10 लाख का भी मार्जिन लगता है, ठीक है। हाँ। आप अगर टाइटन का फ्यूचर शॉर्ट करते हो, एक का आई थिंक 2.5 लाख पड़ता है, आपको 5 लाख में आप 2 लॉट शॉर्ट कर सकते हो। अगर 15 लाख का है, एज पर नोशनल वैल्यू यू शुड शॉर्ट ओनली 2 लॉट्स ऑफ टाइटन, you should Okay. not short more than that, Okay. but only as per the setup. It should come as per setup. Setup, right. अगर आपको ऐसे पिन बार दिख जाए 5 EMA के ऊपर, बहुत ऊपर, और उसका लो टूट रहा है, then only go and short it. Okay. And until you see again a pin bar type of thing, bullish thing, hold that position with the stop loss, and you can trail stop loss as per your what you call Dow theory or whatever it is. Okay. Okay. अगर कभी भी ऐसा भी बन जाए ना, अगर रेड बन गया 5 EMA के ऊपर बट ये नीचे से रिजेक्शन दिख रहा है, तो आप निकल लो आपके शॉर्ट से। आप एनीवे पैसा कमा लियो, आप उस पैसे को डायरेक्टली टाइटन में डाल दो, टाइटन के शेयर्स उसी दिन खरीद लो, फिर राइट करो। जब फिर से कुछ ऐसा एनोमली दिखता है कि सेलिंग वाला प्रेशर दिखता है, सेल कर दो फिर से। सर ये डाउ वाला क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझा नहीं। डाउ थ्योरी इज एक्चुअली आई विल शो यू हायर हाई हायर लो। ओके। मतलब जब तक रीसेंट लो नहीं टूटता, हम लोअर ट्रेंड नहीं पकड़ेंगे। समझ गया। तो अब जैसे ये लो था, इसके बाद ये लो टूटा ही नहीं, ये जा रहा है, नेक्स्ट स्विंग लो बनाया इधर, वो टूटा नहीं, नेक्स्ट स्विंग लो बना इधर, वो टूटा नहीं, वो जा रहा है, फिर ऐसे गया, ये स्विंग लो। अब जाके ये आके स्विंग लो को टेस्ट करके ऊपर गया, तो हम फिर भी स्विंग लो को मानेंगे। बट इसने इधर इसको पहली बार तोड़ा है, तो नाउ वी मे बी इन ए डाउन ट्रेंड। तो इसने फिर वो ऊपर गया, उसने टेस्ट किया इसको, देखा सेलर्स है, वो नीचे आया, फिर से इसी रेंज में घूमा, फिर से गया, उसको टेस्ट किया, फिर से सेलिंग आई। मतलब दिस बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। राइट। और जब तक रीसेंट स्विंग लो नहीं तोड़ता, डोंट बी इन ए सेल मोड। लोग बोलते हैं ना, अरे ऊपर ही सेल करेंगे। भाई क्यों करेंगे? प्राइस तो बोल नहीं रहा है ना सेल करने के लिए, इधर बोला प्राइस ने सेल करने के लिए, तो इधर सेल करो आप, ये ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। लोग क्या करेंगे ना, ये ऊपर जा रहा है, इधर सेल मारेंगे, इधर सेल मारेंगे, इधर सेल मारेंगे। क्यों मारना सेल? नहीं मारना है। राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि कोई भी स्टॉक में, इवन फॉर अदर्स आल्सो, इफ यू वांट टू डू प्ले लाइक दैट ऑन योर होल्डिंग्स, यू कैन प्ले लाइक दैट, बट प्रोवाइडेड एटलीस्ट मिनिमम 1 लॉट वाला क्वांटिटी होना चाहिए आपके पास। लेट्स से टाइटन का 375 लॉट्स है, एटलीस्ट 375 शेयर्स शुड बी देयर इन योर होल्डिंग। यस सर, गॉट योर पॉइंट। मतलब आपको नहीं, मैं बाकियों को बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी कैन प्ले लाइक दिस। सो एवरीबॉडी शुड हैव दैट, कि ऐसा नहीं उठ के मेरे पास 5 शेयर ही है टाइटन का और मैंने 1 लॉट का सेल मार दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। व्हाट आई एम टेलिंग इज the pledging the shares and then playing for a reversal trade. ओके। अच्छा, इसमें सर एक चीज और बता दो आप, जैसे आपको मैंने सुना है इसमें बोलते हैं कि फ्यूचर्स को यू कैन रोल ओवर फॉर 90 days, सो व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? मतलब देखो, फ्यूचर्स contracts are there for 90 days, like how we see, no, minute, इसको mouse. अब आप अगर सेल करोगे, मान लीजिए फ्यूचर्स, आपके पास 3 ऑप्शंस है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप सितंबर का भी सेल कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा प्रीमियम रहेगा। अब जैसे रिलायंस का अभी सीएमपी कितना चल रहा है, अगर फ्यूचर्स का देखे तो स्पॉट प्राइस इज 2401, फ्यूचर्स प्राइस इज 2405, जस्ट 4 रुपए का प्रीमियम है इस पे जी। अगस्त में हम जाएंगे
तो 8 रुपए का प्रीमियम है। हाँ जो आपको मार्जिन दे रहा है वो भी आर्बिट्रेज हिसाब से प्रीमियम खा रहा है ना, उसको भी प्रीमियम देना है। हाँ सितंबर का सेल करने जाओगे 16 रुपए का प्रीमियम है, ओ, तो आप ज्यादा पे करके क्यों सेल करोगे? इसलिए तो लोग करंट एक्सपायरी में खेलते हैं। अच्छा ये आपका कॉस्ट हो गया ना। आप अगर दो मतलब आपका प्राइस चल रहा है 2400, आप हाँ सेल कर रहे हो 2416 में, वो जब सितंबर आएगा तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, तो आप 16 रुपए ऐसे ही गवा दिए। राइट सो आप क्यों करोगे? तो हम इसीलिए बोलते हैं कि 20 से 25 तारीख के अंदर रोल ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी का भी आता है स्टॉक राइट फ्यूचर्स में। राइट। So that's why one should roll over to the next expiry. अब तो सर फिजिकल डिलीवरी का रूल बदल दिया है ना, अब तो खत्म कर दिया शायद। ना 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 ना, है ना। लास्ट हफ्ते में आपका ये होता है, आपका मार्जिन भी तो बढ़ जाता है, एवरीथिंग। हाँ मार्जिन बढ़ जाता है, राइट। सो व्हाई टू कीप? देखो आप तो एनीवे आप लेके जा रहे हो ना, जब तक आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, यू कैन राइट रोल ओवर। ब्लाइंडली नहीं करने का, शॉर्ट लॉन्ग वट एवर इट इज, ओके बट पोजीशन देख के करने का। आप अगर खाली आपके पोर्टफोलियो को देख के हेज करना है, so like this you can do. राइट। ठीक है। somebody has asked how to roll over. कुछ नहीं करना है, एक पोजीशन को निकालना है, दूसरे को खरीदना है। Let's say अरुण जी, you have asked how to roll over. Just if you have sold Titan, when you want to do a rollover to the next expiry, same moment exit that position and sell of next expiry. That is called rollover, rolling over your position. So let's see what is happening actually. पूरा उसी रेंज में अटका हुआ है अभी भी। चलो कितना मिला इसमें? 500-600 मिला। स्ट्रैंड, अरे काम ही नहीं कर रहा अभी। एनीवे जीरो ही है पीएनएल। डेटा, what is data telling? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Welcome. Anything is there, let me know. फाइन सर, Or थैंक यू। anybody wants to ask anything, can ask. अच्छा, हम ये एक्सपायरी देख रहे हैं। 16100 is unwinding actually. 1.77.4 is 16,000 और 16,200 में ही गेम हो रहा है, nothing else. And range is like that. ये ब्रेक भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बीच में ये ब्रेक देके ऊपर आ गया। चलो, now wherever which side is breaking, no, it will be good. It has consolidation is going on here. Let's see. If it breaks downside, we will trade. If it breaks upside, it has to close above VWAP. Here, the Bollinger Band is below VWAP. So one closer has to be above the VWAP. Then only we'll trade in Bank Nifty in the long side if it is happening. So 1 second. Sir, please check between 915 and 20 any future short position made on BN. 950. Yeah, actually it was a, as per 5 EMA, it was a short 930 ko. It was short, it has given target also 1:2. Arunji. But as you know, I mean, on my FNO. Okay. No, nothing short actually. Morning, you see, कोई red बड़ा बार नहीं है in futures. In Nifty, a big long build up was there.
7,400 lots on what is the time? 9:20 approximately. Sorry, 9:25. Other than that, nothing. कोई short build up नहीं है futures में. Actually, things are bullish as per FNO data. Things are bullish today, but 16,000 is the support, 16,200 is the resistance. Let's see what is happening. प्रीतम सर, हाँ, या सर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी प्राइस ऊपर जाता है क्या? लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं तो देखिए, कोई तो अपना बेच रहा है पोजीशन, राइट? हाँ, तो पोजीशन बेच रहा है तो कोई तो खरीद रहा है ना, अच्छा, कोई तो खरीद भी रहा है ना। राइट, तो वो कैंडल देखो, मान लो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा कहीं पे किसी टाइम फ्रेम में, मान लो 15 मिनट में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा, हाँ, एंड उस कैंडल का हाई लो मार्क कर देना। अब ऐसा होगा किसी ने बेचा और किसी ने सेल बाय भी किया है। अब बाय का हाँ, वॉल्यूम अगर ज्यादा है उससे, मान लो नेक्स्ट कैंडल में वो दिख जाएगा कि उस कैंडल का हाई अगर टूट जाता है तो बाय का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। ओके, सो तो देन यू कैन ट्रेड दैट वे। अच्छा, लॉन्ग अनवाइंडिंग मींस द people who are selling and the buyers are absorbing that price. यस यस, Okay. देखो कोई तो सेल किया, जिसने पहले लॉन्ग लिया होगा वो बेच रहा है ऊपर, बट देयर माइट बी समबडी हु इज स्टिल बाइंग एट द हायर प्राइस. Right. He is absorbing his selling position. Now if that seller has been like, he has sold everything, now nothing is there, nobody is selling at that point, so some buying has to happen that place. Okay. So even though the previous candle becomes a long unwinding, it can trigger a further long position. Okay. It's not necessary कि वो long unwinding है तो उसके बाद मार्केट को नीचे ही आना है. Okay. It's not necessary like that. Okay, sir. Okay. या शॉर्ट बिल्डअप हुआ मतलब किसी ने शॉर्ट किया है उधर, और हाँ. कोई तो लॉन्ग वाला एब्जॉर्ब कर रहा है ना, कि कोई तो खरीद रहा है उसको, Right. क्योंकि एवरी बायर हैज अ सेलर और एवरी सेलर हैज अ बायर. कोई खरीद रहा है, वो शॉर्ट सेलर जब शॉर्ट करना खत्म कर देगा और हाँ. वो बायर फिर भी बाय किए जाएगा, और उस हम्म. कैंडल का हाई टूट जाता है तो वो जी. शॉर्ट सेलर भी शॉर्ट कवर करेगा अपना. हाँ. तो दैट मे टेक टू अ हायर लेवल अगेन. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि शॉर्ट बिल्डअप है तो उसको शॉर्ट ही जाना है, बट शॉर्ट गया तो फायदा है एक्चुअली इन अदर सेंस, बट जी. जरूरी नहीं है कि उसको नीचे ही जाना है. हाँ. Right. Thank you, sir. Thank you. So yeah. Sir, how can we identify whether FI or big player doing long? Nothing, brother. We cannot identify anything. But yes, we can see the volumes. If the volumes are big, that somebody might have been doing something. Some big players would have been doing something. Retailers will not be that much capable to short 7,000 lots of Nifty or long 7,000 lots of Nifty. In futures, it is not possible for retailer. That might be an institution or anyone. It can be FII, it can be DII, it can be anybody, or HNIs also. So we cannot identify who is doing, but yes, some big player is doing something. Because markets are run by big players only. We should be there to only ride on their shoulders. We should not try to determine the market, but we should try to be on their shoulders. It can go down. Somebody would have booked their position. See, we don't know previous day. Arunji, you asked like 9:25 morning, even after that it is going down, some long speed. Now longs made can be somebody who would have done
short here, he would have booked long here in loss. It also can be today morning only it is showing no long built up. So this can be a long built up also as per data. Somebody would have shorted here and they booked long here. They booked their short here, which is a long build up actually as per the data, but it could have been he has booked his losses here. So just see the data built up in context of the previous few days or previous few candles, not in isolation. इधर एक BBMA का short बन रहा है. The opening, mouth opening is also there. So just let me mark. Can short Nifty here with this as SL. I'll just tell. Just triggered also almost. No, not triggered. The low is 1668. So 1665 you mark as short with the SL of 16108 or 1010. Just mark. $80 points. $16,065. Let it trigger in next two candles. Otherwise, no trigger. Let me prepare. $16,100 का short. Triggered. It triggered 16,100 call. So I've shorted 16,100 ka call. What is the price? 16,100 call shorted as 64 rupees. Now the stop loss is that I will hedge it with 16,300 ka call at 68 rupees. If anyone wants to take. BN also in BBMA, no, it has not triggered. Sir, EMF5 ideas, wonderful. Yes, it is actually.
For scalper and long positional trader, yes, for everybody, this 5 EMA is a wonderful trick. Many people will start claiming it is their own, it is their thing and all. I don't want to claim all those things. I have been using it. I've been doing this and it is giving results. So it should also give you people results. Sir, I'm trying on 3 EMA also. Don't go so much shorter actually. It will give some good time, good space actually. 5 EMA is an approximately good space. It will show a good space between your price and what you call and the EMA. It will give a visibility. In 3 EMA, it will be very tight. Now Nifty going down, I'll put in the group also. Some people might have been missing. See, taking a trade, then typing and putting in the group actually takes time. So what I'm trying trying to teach you people to take a trade on your own by seeing all these things. Now Bank Nifty is also coming. It will be a very, very good trade actually. Let it close. So what's the data tell? This going down. 16,000 is still holding, but 16,100 is giving up actually. So let's see. Below this low, give some buffer and sell Bank Nifty. The volume is also increasing here. 35,034, 35,030 sell Bank Nifty. Let this candle close in 10 seconds. After that, you try. $35,030. Initial stop loss is very small actually. 35,180. Target 180 points approximately. Let me prepare my positions. Just hold on.
Okay. Not triggered. Let me put this. Zero, 3, 0. It will become a ping pong anyway. What is the low? No, not triggered still. What happened to our shorts? Let's see positional. Axis Bank is still ping pong. ICICI Bank, good. Bata, good. M&M, okay. IndusInd, going good. Godrej also. Britannia also. HUL is still. SL is intact. Asian Paint still SL is intact. Maruti, okay. Near to our entry only. Chalo. No fresh positions. I think PUG told about M&M Finance. Let's see. See, the things have changed. Let it close near 3 p.m. Be a red bar actually here. Then it will be a good thing. And actually, as per volume profile, also huge volume activity in this region. Let's see if anything was there earlier in this region. No. So it may be a distribution. It may be. Let's see how it closes. PUG, you want to speak? इसलिए बताया सुबह हाँ आपकी नजर में भी रहे ना हाँ हाँ हाँ, इसलिए मेरे दिमाग में है अभी, इसलिए मैंने देखा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। लेकिन ये सेटअप अच्छा बन रहा है अगर अगर लो ब्रेक कर गया 3 बजे के बाद। लो ब्रेक नहीं, आपका क्लोजिंग इधर हो जाए, मतलब लो के पास भी हो जाए ना, इट विल बी गुड। मस्त पिन बार बन जाएगा। मस्त पिन, एकदम परफेक्ट पिन बार बनेगा। एंड यू कैन शॉर्ट और वेट फॉर टुमारो एंड शॉर्ट आल्सो, नो प्रॉब्लम। चलो हमने 64 पे शॉर्ट किया, 56 आ गया, 10 रुपए मिल गए ऑप्शन शॉर्टिंग पे निफ्टी में। नाउ इफ इट, I'm adding 16,300 call as a hedge for this position at 64 rupees. I'll show how I have made this. It is a, where is calendar? Long calendar actually. So I have shorted this 16,100 call and adding 16,300 call. Now shorted 16,100 call at 64. Bought now this one at 64. Okay, that's what this looks like. This one lot trade, if anybody is doing, already in profit. Let's see, mine is not one lot trade, so this says triggered, both triggered.
Now 16,000. Let's see if it is 1623 has come. What happened to our this spread? Where is the other spread? Oh, I changed it. This one. It's not showing the positions properly. Oh, this is Reliance. I changed that. I forgot now. I have to change it. $15,900 I've done. Rest everything cover. 15,900 I shorted. And 16,300 call. Okay, let me see this. Great. Now give the target 80 points. Then we will do the trailing stop loss. Now we had made this at 16,300 call is shorted near 19 rupees. $15,900 put shorted near 17 rupees. $15,400 put long at 17 rupees. 16,700 call long at 10 rupees. Okay, now we are in loss of 347 as of now. Here, what has happened? 512. This huge volume has come. So somebody is buying or absorbing. Let's see what the data is telling. 16,000 gone below 3, but still it's a support 2.54. It's going, it's a very big short. Nifty, there is no data in futures actually. No activity in futures, but you see how the put writers have given up. This green has come down and calls have increased. Sir, one doubt, what if we get sell on BBN, buy on EMA, so which side to follow? Both trades should be different. That's why I trade in options, Satyamji, so that I can take both side trades. See, both setups are different. If you want to follow one setup. If you want to follow only BBMA, you follow only BBMA. If you want to follow only EMA, because EMA 5 is a reversal setup. So maybe it can happen that after the BBMA target is over, it may give a EMA 5 target also. EMA 5 option to long. So you will be in a confusion what to do.
So in that case, just follow one setup. Otherwise, just see now what is happening. It is becoming a bullish pin bar, maybe. If it becomes, then EMA 5 we will close, or we will see what will happen, or will trail stop loss. Let it close above 5 EMA. 5 EMA for Bollinger Band trade should be used for trailing stop loss only. Let's see what happens here. But usually I will try to stick to one trade. Let the trade get complete fully. If you are taking futures trade, then otherwise it will become a mess for you people. I trade in options, so I can switch positions very fast. Like one trade will be going, I think in 21st or 17th June webinar I have shown, I was short side also, I was in long side also. For 2 trades I was in short, for 1 trade I was in long through options only, and one gave target. So my other 2 trades which were in loss, that one target actually balanced the entire trade. Actually, logically, here is a support, is a 16,010 is a low today's. 16,000 is a support, so bulls will try to defend it, this zone actually. Later it may fall if it wants to fall, or the support will come here. So we don't have any close above 5 EMA yet to trail our stop loss. Let's wait for it. Let's take a break for half an hour. We'll join. Anyway, you can see in screen what I'll be doing. But let's take some break. So 13, 35 or 40. 140 we will join.
हेलो गाइस, हाउस थिंग्स? हमारा टारगेट हो गया बीबीए में निफ्टी का, एंड बैंक निफ्टी स्टिल देयर, बट बेटर टू बुक 75% और छोटा सा लेट इट बी देयर. नाउ वन निफ्टी ट्रेड इज देयर, 5 EMA reversal. It triggered just now, so let's see. So everyone is here, no? Or I am just speaking on my own? नहीं सर, सुन रहे हैं आपको. अच्छा, बढ़िया है. निफ्टी का टारगेट हो गया है, बैंक निफ्टी का पेंडिंग है. विल ट्रेल और स्टॉप लॉस, अभी तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ नहीं है बैंक निफ्टी का. निफ्टी is doing a good reversal trade now, I think. Let's see. Small stop loss. If it happens, then good. सर स्टॉप लॉस कितना बोला सर आपने? ये इसका लो के नीचे, छोटा नीचे 15975 हो भी सकता है, हिट हो जाए, बट वो बहुत छोटा है, 20-25 पॉइंट का बस. $60. $1500 का स्टॉप लॉस हिट. चलो, एनीवे, नो प्रॉब्लम. सेल हिट. बैंक निफ्टी का टारगेट भी हो गया है. Modify. So चलो, बीबीए में आज डेमो में अच्छा टारगेट दे दिया. नाउ इफ एनीबॉडी वांट्स टू bring SL, they can bring SL here, though there was no closing actually above 5 EMA yet, but this was a swing. कोई अगर ट्रेड में है, they can bring their SL here, TSL, trailing stop loss here. Though still I'll tell this is not a trailing SL yet.
चलो देखते हैं हमारे पोजीशंस का क्या हुआ, स्टॉक पोजीशंस का। इसको चेक। इंडुसन ऑलमोस्ट टारगेट। कौन सा? इंडुसन 809 रुपये चल रहा है। इंडस इंड 809 आ गया क्या? अब बुक करता नहीं हुआ ना भाई, कहाँ हुआ? अच्छा मैंने, ओके सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर। 1:2 कहाँ है? मैंने 797, हाँ ओके, और 11 पॉइंट्स बस, ठीक है कर सकते हैं बुक, अभी तो कर सकते हैं एक्चुअली। मैं जाता हूँ 1 मिनट। मैं पता है आई डोंट सी ओनली, आई जस्ट सी एट 3 PM 2:30 एंड देन आई डिसाइड क्या करना है। सीएट विनय जी, हाँ 1 मिनट, मैं इंडसइंड का बुक कर लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। कल ही ट्रेड लिया था, आज मिल गया, ऐसे मिलना चाहिए एक्चुअली। नहीं, 2 दिन पहले कल। हाँ 2 दिन है, पहले, यस हाँ, यस। हाँ, हाँ। निफ्टी का एसएल नहीं हिट हुआ, 70 आपने डाला है। हाँ निफ्टी का 70 आपने डाला है एसएल। हाँ एसएल हिट नहीं हुआ, बट ठीक है वो अभी मोड में ही है, सेलिंग मोड में। मैं इंडसइंड बुक करता हूँ 1 मिनट का क्या, एक्सिट। चलो बाय, बाकी सब गोदरेज सीपी का क्या, ये रिटर्न, हिंदुस्तान लीवर थोड़ा परेशान कर रहा है, एशियन पेंट्स भी, बट ठीक है। एशियन पेंट्स आज अगर क्लोज दिया 2950 पे, सो काइंडली एग्जिट, स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका। क्रूड गिरा ना, इसलिए एशियन पेंट चल रहा है। यस यस, ठीक है। M&M फिनांस आ रहा है, सीएट बोले ना विनय जी, सीएट। हाँ इट इज अ M&M मस्त गुड वन, आएगा। हाँ ये मस्त है। हाँ क्रूड के साथ ही है ना लिंक इसका भी, रबर का, ठीक है। लेट इट फॉर्म एक्चुअली। 3 बजे तक वेट करते हैं, ये लो टूटा 3 बजे के बाद, देन विल एंटर इन दिस। इसको भी ऐड कर देते हैं। विनय जी नाइस पिक, बट ये फ्यूचर में है क्या? हाँ I है। never heard actually. नहीं नहीं दिखा रहा है, 1 मिनट। पहले था, निकल गया है। हाँ now how to see it? नहीं, नहीं है। no you cannot short FNO। 196 FNO picks are there, one can check there actually, but as per setup this is a good one। इसके नीचे, लो के नीचे आज 3 बजे के बाद क्लोज किया तो वन कैन गो शॉर्ट, पर शॉर्ट तो हो नहीं पाएगा, सो इग्नोर इट। डिलीवरी हो वो बेच सकते हैं। हाँ जिनका डिलीवरी है बेच सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डबल टॉप ऑल्सो, ट्रिपल टॉप एक्चुअली। इसको अगर बड़ा करते हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एक्चुअली। डिलीवरी पे है तो भाई किसी ने इधर बाई किया तो निकल जाओ, फिलहाल नीचे आया तो बाई कर लेना फिर से। 900 is a buying zone, this is a buying zone, but फिलहाल it's not good।
चलो M&M Finance looks good, इसको वॉच लिस्ट पे लगता हूँ मैं. We'll check near to 2:30. बाकी सारे FNO स्टॉक्स देखेंगे किस किस में हो रहा है सेटअप. रोशन जी आप जो बता रहे हो वो मैं बता नहीं सकता इधर. मैं देख रहा हूं सब कुछ. अभी तक स्टॉप लॉस सर कितना था. चलो एनीवे ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया. फाइन, नो प्रॉब्लम. Is BNF buy in 5 EMA? No, it is not a green candle. 5 minute 5 EMA not a green candle, but check in 15 minutes. It's making a good bullish candle both. Abhi 12 minutes is there to close the candle. So even if the same candle remains no in next 12 minutes, it's a good buy in 15 minutes candle. I'll show it in 15 minutes. Kya ban raha hai? See, black line is the 5 EMA. अगर टच कर गया तो we'll lose the opportunity. निफ्टी में अच्छा बनेगा if it is closes bullish in 15 minutes. 5 minutes में nothing is there. So I think we need to close Asian Paints today, but let us check till 3 PM. 3 PM को decide करेंगे. दो दिन तो पोजिशनल चीजों को रखना है. Then only it may give target or SL. बढ़िया रिवर्सल मारा. वो रेंज मेंटेन है ना हम लोग का 15,900 to 16,300. So it will be like this. And 16,000 is a very good support, round number support. So it has to sustain there actually. नहीं तो बुल्स को भरोसा उठ जाएगा. 15 minutes में 5 EMA Bank Nifty has touched 5 EMA, so no trade. Nifty also is going to touch now. 5 EMA in 15 minutes at as 1610. 16,010. So अभी 5 EMA actually कोई trade नहीं है. I'll clear this. But actually it was a good trade. Anyway, chalo. Anybody wants to speak, they can speak, they can raise their hand, they can chat. सबको जवाब मिलेगा. $15,900 was a very good support. That's what I told. Now 16,000 is at 1 near to N. 15,900 was at 6. Now it is 5.98. It's a very, very, very good support. And if you see technically, we have filled some gaps actually.
I'll show in this. ये रहा एक गैप था on 6 July, 7 July का gap. This gap we have filled. So if we are sustaining here in the lower range, we may further drip down. हमारा yesterday's low टूट गया. We are making lower highs now in 45 minutes. So if anybody is positionally, they can sell calls. Any upticks, sell calls with hedges positionally. Now we may come to this 15,800 in 1 or 2 days. To test how strong is this consolidation zone, how strong are the bulls here. I was seeing something else. Let me see. Okay, anyone? Yes, 7th July gap fill. Yes, that's what I'm telling. Gap filled, but let's see how it reacts here. If bulls not able to give support here, then we are going 15,800 straight away. Now now this can be a TSL. Here also, if anybody is trailing or anybody has kept any position, now see this candle has closed above 5 EMA, has closed above 5 EMA. The second candle will wait. This can be the trailing stop loss if anybody is still carrying from here till here. So we are still in green if our stop loss is hit for rest of the positions or anything. For the BBMA trade, I'm telling. From here, now our stop loss, trailing stop loss comes here. Okay, 1 minute. I think I've done wrong. The SL is not hit. Let me take the position. Sorry guys, the SL is not hit in this. In the 5 EMA trade. Why I've put SL not hit? Yes. It is 530, 790. $970. Okay, 1 second. Let me take the position.
Hello, I have shorted 15900 put at 53. Sorry, at it was average at 47. I'll buy 15600 put nearly 58, 56 just for hedge purpose, because it's in put side, so hedge should be there. Fifteen minutes. What is happening? Nothing. So 1 second. Anyone wants to speak can raise hand or type in the chat. I answer. Nothing is there actually now. Yes, Abhishek ji. हेलो सर। या बताइए। सर मैं आपको बस थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो मतलब टेक्निक है ना वो 5EMA और BBMA का बहुत अच्छा है। मतलब मैं इतने दिन से कर रहा था सर, तो अभी मुझे ओरिजिनल में लग रहा है कि ये 100% वर्क कर रहा है अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करें तो। हाँ, डिसिप्लिन चाहिए। मतलब जो दिख रहा है वो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चूज कर रहा हूँ, वो चूज ही नहीं होना चाहिए। जो दिख रहा है उसमें करना है, उसी में मैंने करना आपको मॉर्निंग में भी पूछा था कि हम मार्केट ऊपर जाएगा क्या, लेकिन आपने बोला था कि नीचे आएगा वो। और एग्जैक्ट बैंक निफ्टी मतलब इतने दिन बुलिश था और निफ्टी नहीं था, तो अभी बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है और निफ्टी भी नीचे आ रहा है, दोनों। ठीक है, वो तो मिल गया, मैं बोल नहीं सकता, हो गया, तुक्का लग गया मेरा अब। नहीं सर, होता है सर वो तो सर एक्सपीरियंस है ना आपका, एक्सपीरियंस तो ये नहीं जाता ना सर। ठीक है, बट अभी ट्रेड कीजिए, अच्छा है, कीजिए। देखो मेरा फंडा ये है कि हर कोई कमा सकता है मार्केट में, बट उसको डिसिप्लिन से करना है, रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करना है, तभी वो कमा पाएगा। इधर उधर करेगा तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा, फ्रैंकली मार्केट नहीं देगा पैसा। और सर वो जो EMA 5 वाला है वो डेली पे अच्छा वर्क करता है ना? डेली पे भी करता है, आप किसी टाइम फ्रेम, आप स्कैल्पर के लिए भी काम करता है। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, 5 मिनट का कर रहे हैं, 5 मिनट में भी काम कर रहा है वो। देखो 5 मिनट में छोटा टारगेट 1:2 ले लो, तो मतलब इफ यू सी कि आज मार्केट बढ़ेगा तो लोग बोलेंगे अरे बढ़ता हुआ बढ़ता ही जाएगा, वैसा नहीं भाई। डिसिप्लिन से 1:2 लो, निकल लो, बैठ जाओ चुपचाप, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं तुमने कमाया है। तो वैसे काम करेगा, 5 मिनट में काम करेगा, 15 में करेगा, आधे घंटे में करेगा, 1 आवर में करेगा, किसी में भी करेगा। ओके, वो करेगा ही काम। बिकॉज देखो एक इंडिकेटर को कैसे काम करना है, वो मतलब कैसे कराना है, वो मैटर करता है। आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। देखो ये 5EMA के नीचे क्लोज दिया, मैं शॉर्ट किया, कंटिन्यू ट्रेल करूंगा जब तक 5EMA के ऊपर क्लोज नहीं देता, वैसा भी हो सकता है। और हम ढूंढ रहे रिवर्सल, वैसा भी हो सकता है। तो किसको कैसे काम करना है वो मैटर करता है।
वैसे भी Okay. कर सकते हो आप, सर खाली लेकिन 5 EMA लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना सर, मतलब जो भी मार्केट का ये वो बोलते हैं प्राइस एक्शन पे इंडिकेटर काम करता है ना। हाँ करता है, बट हम प्राइस एक्शन का ही वेट कर रहे हैं ना, हम वेट कर Okay. रहे हैं ना कि कब हमको दिखे। मैं तो बोल नहीं रहा कि 5 EMA पहले से काम करेगा, मैं बोल रहा हूँ प्राइस क्या बता रहा है, प्राइस अगर बुलिश कैंडल बना रहा है हम घुसेंगे, यस यस यस। हम गिरते हुए मार्केट में लॉन्ग कर रहे, हम चढ़ते हुए मार्केट में शॉर्ट कर रहे, वो प्राइस देख के कर रहे हैं ना हम। प्राइस आइदर वो बियरिश हैमर बना रहा है या बुलिश हैमर बना रहा है, उसके बाद जाके कर रहे हैं हम। ओके। इंडिकेटर तो जस्ट हमको इंडिकेट कर रहा है कि इतना दूर है तो वो एक रिवर्सल मारेगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि मीन रिवर्सन जो बोलते हैं ना, कि एक उतना रबर को आप स्ट्रेच करोगे, गर्डर को स्ट्रेच करोगे तो एक जगह पे वापस आता है ना फिर से, यस तो यस। सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है ये। बॉलिंजर बैंड को आप रबर मान लो, ईएमए को रबर मान लो, उसको खींच रहे हो, मतलब ये खींचाई हो रही है ना, 5 EMA का खींच रहा है, तो वो एक जगह पे आके वो स्ट्रेच करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, नथिंग एल्स। हम लाइफ में जो देखते हैं सेम चीज है इसमें भी, प्राइस एक्शन भी वही है। देखो ये दे दिया, अच्छा है, अच्छा खासा एंट्री ले लिया था मैंने, बढ़िया सा। तो वही है, देखो मेन चीज, आप प्राइस एक्शन जो लोग बोलते हैं ना, प्राइस एक्शन क्या है, लोगों का साइकोलॉजी है, कितने लोग उस चीज पे काम कर रहे हैं। अब देखो इधर एक बुलिश हैमर बना, इस चीज पे बहुत लोग घुसेंगे एक्चुअली, और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, हिट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो जिनको बुलिश बनाया, जो वीक बुल्स हैं उनको निकाल दिया, अब ऊपर जा रहा है। सो इट्स एंटायरली साइकोलॉजी बेस्ड। किसका साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी क्या कर रहा है, मास साइकोलॉजी बोलेगा मैं इधर बाय करूंगा, बुलिश कैंडल दिखा, मास साइकोलॉजी बोलेगा मैं इधर सेल करूंगा, तो हमको उसके कंधे पे बैठना जो मास साइकोलॉजी सोच रहा है। बट ऐसा नहीं हो कि रिटेल गलत है, रिटेल सही है, कुछ मत सोचना वैसा। दीज आर ऑल पार्टिसिपेंट्स, रिटेल नहीं है तो एफआईआई भी नहीं है। एफआईआई किसको माल बेच रहा है, रिटेल को बेच रहा है, तो अगर रिटेल नहीं रहता एफआईआई माल नहीं बेच सकता था। तो खरीद किससे रहा है, फिर रिटेलर से ही खरीद रहा है अगर एफआईआई खरीदना है तो। सेम यस यस सर। साइकोलॉजी, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना, व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई टॉक, कीप ऑन टॉकिंग एक्चुअली। सो एनीवे, किसी ने पूछा है एचयूएल, एचयूएल तो हम शॉर्ट है भाई, बट एचयूएल वी आर शॉर्ट एट दिस zone 2464 2450 at this zone. Our stop loss is this 254050. If it closes, I'll put it, I'll not put it in this chart actually, let me put the short thing. टू 2540 के ऊपर क्लोज देगा, विल बी आउट। We are already short in this as per 5 EMA trade. Vinay ji, ₹6 मिल गए पुट में। You will tell 6 rupees is so less, 6 rupees into 50, but I don't do small 1 or 2 lots. So anybody wants to speak, they can speak. सर मैं एक पूछना चाह रहा था। हाँ हेलो, बताइए बताइए। सर कल भी हमें बैंक निफ्टी पे सर मतलब 5 EMA पे डेली में रिवर्सल मिला था ना। एक मिनट जाता हूं मैं बैंक स्पॉट निफ्टी। चार्ट सर। हाँ एक मिनट जाता हूं मैं। ये डेली में, हाँ है ना वो, इसका हाई का एसएल लगाओ और सेल पे बैठ जाओ 1:2 का। 35,600 का लगा के। मैं बैंक निफ्टी में एक्चुअली पोजीशनली ट्रेड नहीं करता। हाँ सर, लेकिन मैं वो देखा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो हाँ ये रिवर्सल है, कैंडल भी हमें दिस इज देयर एक्चुअली। ये एसएल लगाओ एंड 1:2 विल बी नियर टू, हाँ अब ये आएगा आपका
ये चैनल का लो पॉइंट तक, मे बी 1-2 दिन 3 दिन लगा है, बट आएगा 33,750, 33,800 तक ठीक है सर। आ सकता है, बट ये स्टॉप लॉस जरूरी है, इसके ऊपर क्लोज दिया तो निकल लेना, ओके ठीक है सर। अगर पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो। ओके ओके सर। ठीक है, चलो देखो, this was a SL, this is hit, trailing stop loss hit. So like this only you need to trail your stop loss to, आज तो direct momentum मिल गया, target हो गया. Some days it will be like this, swing swing swing, high बनाता हुआ जाएगा. Good good good. Target भी दे दो 5 EMA का. Today we have got good trades if this target happens. BBEMA also, 5 EMA also. 5 EMA was there here actually today in Bank Nifty. Nice 1:2 target given in 5 EMA. Then BBEMA also. अब 21 EMA पे Nifty resistance ले रहा है. Orange line is 21 EMA. If it breaks, it should go and touch this low or this VWAP at least once today. And our range will get completed. What is the position now in this strategy? 0. No, we are in green actually. I think 800, 900, minus 100 nearly, minus 200 now. If you add this PNL. Amanji, things are good. 15,900 put. What? Which one is this? I don't know what was this. Oh, this one was that trade. सर गोदरेज सीपी क्या हुआ, आया वो ऊपर ही भाग रहा है. ऊपर ही भाग रहा है. गोदरेज सीपी, चलो देखते हैं. हाँ, let it go. Our stop loss is very fun. It's okay. We'll hold it. हम मोमेंट पे नहीं देखना चाहिए. 1 घंटा देख के देखो, 2 घंटा बाद देखो. Mainly action after 3 PM should be seen. Asian Paint, if doesn't close above our SL, I'll not close the position. ये फिर से नीचे आ रहा है. So we'll see. Now 5 EMA has become a support. If you see, कोई भी support type भी 5 EMA को use कर सकता है, कोई reversal trade के लिए use कर सकता है. Anything can be done actually. Now 21 से rejection ले रहा है. 21 से it is also 16,000 something, so that's why. Let's go and check क्या है डेटा. 0.95. अब 16,000 पे straddle writing होगी. हाँ देखो, जस्ट बोला मैंने 16,000 straddle writer started. I'll make it little bit big. Hello. हाँ, it has gone now, refreshed. See 15,700 put writers. Arey, what is this? 16,000 put writers have come. Put so I 3,300 lots.
and 16,100 call and put unwinding both happen. And here red are the call writing. Now see here 34,900 straddle writing is going on. 35,000 call writing and 35,000 huge 34,800 huge put writing. So hopefully they will close 34,900 35,000 zone near to the round number, as well as for Nifty 16,000. A huge call writer have come as 35,000. चलो ठीक है, ये भी सही है. Sir, what will be the overnight trace for today? We have not taken, Arunji, we have not taken, or we have not identified anything. So let's let's see. Let me pull up my other chart. Let's find out if anything is there or not. FNO list. Aarti Industries. Let me make it a little bit bigger. No. ABB, no. Adani Port. Only below this low, 725, 724. After 3 p.m. if it closes, then Adani Port, but again 720 is the 5 EMA. We'll avoid for now. But tomorrow is the dividend distribution also, so maybe it can fall. Anyone know how much is the dividend for Adani Port? ₹5 approximately. So it can fall ₹5, I suppose. Can keep a stop loss of 745. So anyway, we'll keep in notice. Apollo Tires. C8 Apollo Tires, everything is. Apollo Tires can keep a notice. Vinayji, let it close first. I'll just write it. Apollo Tires. If it happens, then only. Adani Ports. Asian Paints were short already. Balkrishna, no. Bank of Baroda, yesterday we were talking, no? This low, today's low. Bank Baroda. Hey. Somebody was telling Bharti was bullish. Yesterday it didn't close only bullish. And dhamadham. Now tomorrow if it forms a bullish bar here,
then away from 5 EMA, it will be a good trade then. But let it form. Boss, to forget it. प्रीतम सर, हाँ। सॉरी सर टू डिस्टर्ब सर, अभी कोई करंट रेट चल रहा है सर हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी में? निफ्टी का तो लॉन्ग है ना 5 EMA, दिस ट्रेड जो डाला हुआ है ना, ग्रुप में भी डाला है। 5 EMA रिवर्सल ट्रेड, निफ्टी बाय अबव 15999, SL 15970, टारगेट 1:2। अच्छा, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है सर? बैंक निफ्टी में नहीं है, वो बनाया ही नहीं कुछ भी। ठीक है सर। निफ्टी का चल रहा है ये, आई थिंक टारगेट विल बी 1604046। मैं टारगेट भी लिख देता हूँ उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। या 16045। एक्चुअली मेरे को ट्रेड लेना फिर टाइप करना, it takes a lot of time. Yeah. So Arun ji, very nice, but let me go one by one. Let me find out if anything is there, because I believe in doing things myself. मैं एक one by one देखता हूँ सबको। Sipla finally started moving. Kabir ji, you are there. Kolpal. Container Corp. We were long actually. Here we can be short below today's low. We'll see tomorrow this one. Concor. No fresh trades yet, but we are finding out if anything is there. Cummins to there, yeah, I think PUG only have found out Cummins, but anyway, actually I have entered it, but it was not that much. Deepak Nitrite, no. Dixon can be a good one. It was making a solid bar. Let it complete. DLF also, if it becomes a red, DLF. Excite, no, not formed properly. This was good. Fed Bank, we didn't check it actually yesterday. If anybody gets an entry near yesterday's close, yesterday's low, by any chance tomorrow or day after, then enter it. Now no point of entering actually. Fed Bank is good, near 98, 98.2, 98.5. 98. I'll just write about this in the group. If anybody tomorrow, day after tomorrow, get chance to enter near these zones with the stop loss, it will be very nice trade. Yes, so that's how I spend my time finding trades. Havels, let it become a bearish bar. It will also be a good trade. So many trades today we are getting due to the gap up. All on the short side. This one might come tomorrow
ACL Tech. The result is also over. If becomes bullish tomorrow, then it will be a good trade. What happened to HDFC? Any news? All banks, entire group has been shorted. HDFC Bank. I don't like this name actually. Many guys knows why. So I'll find opportunity to short always this group. HPCL we missed. Anyway, it's fine. I say so. Anyway, we are in short already. All are short itself. Nothing. Indian hotels. Good formation. Very small stop loss, 5 to 6 rupees, but the lot size is huge actually. So kindly be very careful. I trade in Indian hotels actually with option spreads a lot of time. Let me tell you. The lot size is around 4022. So just be careful if you want to trade, but this is also good setup. IndusInd Bank target done. Arey wah. Full target done. Badhiya hai. 800. Suddenly, why such fall came? Any news? IndusInd. Look at the volume pin bar. In 5 minutes, it will be long trade on 45 minutes thing. If anything is happening like this. Kaustavji, scalper. Be ready. 45 minutes candle, if you see. Indus Towers, no, not yet. Jubilant Food Works. Tomorrow we'll catch this one. Today still bullish. L&T. Good one, actually. I told someone to short, I think 1654. L&T is a good short. I think Mausamji has asked me about L&T. I told nearly 1670 zone itself to short it because it was triggered already. Already on 20 rupees profit. It's a good shot. L&T is a good shot. With this high as stop loss, 1700. Let me add LT. I didn't do anything. Okay, we'll check. But LT futures on discount also. 16 rupees discount. God.
Maruti also stuck. Metropolis, MS. Anybody have anything long in MRF can book? Is forming some double top formation. V-shape recovery. Anyway, MRF holding people are all big shots. 1,70,000 each year. M&M Finance not yet POC. No, One second. NMDC. Double bottom formation, making a hammer here away from 5 EMA. Now only it has given a move. So good. Let's wait for 3 PM. It's a good long candidate. Finally, some long has come. ONGC was there in my list, but it is touching 5 EMA. Power grid we spoken actually, I think yesterday only. But no trade. I have not taken any trade in this. REC. The dividend has come, it has fallen. Reliance, what's happening? Nothing. SBI Life. Tata Chemical, somebody written. No, nothing. It has touched 5 EMA. Tata Chemicals, see, no trade only. Yesterday, I think it came in our radar, but I think done. We have found out something. This is my scanner. That's how I scan. So we have got few stocks. Apollo Tires. Let me put it in the basket here. Apollo Tires. Adani Ports. Baroda. Concor. Dixon. DLF. Havels.
Ind Hotel and NMDC. So these are the fresh. We found out some opportunity. Let us see what happens at 3 p.m. I think Srinivaji wants to speak. I think some problem is there my side. Some power fluctuations. Maybe for half an hour it will go off. So if you see blank screen, don't leave. Within half an hour it will be back. So yeah, tell me. Like, am I audible? Yeah. Yes. So in Bank Nifty around 2.5, is that sell signal? I know it's above 5 EMA. It is there, but actually if you see, it is not moving one side. The It next was candle just- actually closed below that one. So it's okay. Nothing. I think my PC will shut off now. There was some problem. I think we'll hit the target. Don't leave. Within half an hour it will be back. Sure. Okay. I think it will shut down, so don't leave the webinar. Okay. Yeah. So this will, yeah. प्रीतम जी, Yeah. ये जो स्टॉक्स आपने बोले हैं, आई वाज नॉट देयर, सब शॉर्ट्स में है कि लॉन्ग में भी है? हेलो